पहले चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर अलीगढ़ के तालिब इल्म रहे। हिंदुस्तान की पहली खातून वजीर आला अनवरा तैमूर आसाम की अलीगढ़ के विमेंस कॉलेज की तालिबा रही हैं। सींचा है इसे खून से हम तशना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस इदारे के ज़र्रे ज़र्रे में सर सैयद का खून पसीना शामिल है। यह इदारा हाली की गिरियावजारी का प्रतीक है। इस इदारे के अंदर शिबली की आहुजारी है, इसमें साहबजादा आफ्ताब अहमद की जमा मर्दी है और इसमें शाह सुलेमान के हौसले शामिल हैं। आज जो ये खूबसूरत चमन हम देखते हैं, जो थोड़ी देर में ये कुर्सियां भर जाएंगी और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया हमसे जुड़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरी दुनिया में हमारे ऐसे उशाक हैं यूनिवर्सिटी के जो रात गए जाग कर इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि थोड़ी सी और हमारा साथ दीजिए, थोड़ी देर और रुकिए। इंशाअल्लाह हम थोड़ी ही देर के अंदर जैसे ही हमारे मौजूद मेहमान यहाँ दाखिल होंगे इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं आप सबसे तालियां चाहूँगा। चौधरी विजेंदर सिंह दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं, हमारे तालिब इल्म रहे हैं चौधरी विजेंदर सिंह। ख़वातीन हज़रात, आपको ये जानना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि साइंस के मैदान में जो झंडे गाड़े हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। प्लांट निमेटोलॉजी में अबरार मुस्तफ़ा खां, ये वो तमाम नाम हैं जो इंटरनेशनल फेम के हैं। फ़िज़िक्स के अंदर अशोकनाथ मित्रा, एंद्रे वेल, मोहम्मद इसाक, पी वेंकटेश्वरलू, PS गिल, कृष्णकांत आसुंदी और वली मोहम्मद। अंटार्कटिका के अंदर हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले कोई और नहीं, अलीगढ़ के सपूत डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम थे, जिन्होंने ज़ूलॉजी में यहाँ से MSc हासिल किया था। मेडिकल साइंस के अंदर पद्मश्री मेहदी हसन का सिक्का चलता है। मेहदी हसन इसी दयार के उस्ताद रहे। यूनानी मेडिसिन में हकीम ज़िल्लुर रहमान साहब, मैथमेटिक्स के अंदर गणेश प्रसाद, रज़ीउद्दीन सिद्दीकी और स्वरूप चंद मोहन लाल शाह। ज़ूलॉजी के अंदर सत्यनारायण सिंह, मोहम्मद शरीफ, ज़हूर कासिम, शमीम जयराजपुरी। जियोलॉजी के अंदर फ़खरुद्दीन अहमद, नसीम सिद्दीकी, सैयद महमूद नकवी और प्रेमनाथ गंजू। केमिस्ट्री के अंदर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी और RD देसाई। जियोग्राफी के अंदर सैयद मुजफ्फ़र अली और मोहम्मद शफ़ी पद्मश्री। इस्लामियात के अंदर अख्तरुल वासे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पद्म विभूषण अवैस सिद्दीकी। हिस्टीरियोग्राफी में DD कोसम्बी। फार्माकोलॉजी में PN सक्सेना और KC सिंघल। हिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब और मुशीरुल हसन। पद्म भूषण इरफान हबीब और पद्मश्री मुशीरुल हसन। और मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी के अंदर अशोक सेठ, जिनके नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज करने का रिकॉर्ड है। कुरानियात के अंदर शिबली, अल्लामा सुलेमान नदवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सईद अहमद अकबराबादी, फजलुर रहमान गुन्नौरी, मौलाना नक्कन मियाँ, तकी अमीनी, अब्दुल हक अंसारी, राव इरफान अहमद खां, इक़्तिदार हुसैन फ़ारूक़ी, अल्ताफ़ आज़मी, यासीन मज़हर सिद्दीकी, ज़फ़रुल इस्लाम इस्लाही, डॉक्टर अजमल अय्यूब, अब्दुल रहीम क़िदवाई और सऊद आलम क़ासिम। अलीगढ़ है जवां किस्मत दबिस्ताने कोहन, अक्ल के फानूस से रोशन है तेरी अंजुमन। हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, तेरे
रज़ा है शराबे इल्म फन। रूह सर सैयद से रोशन पूरी शान और शौकत के साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तशरीफ ला रहे हैं। ये बग्गी जिसके अंदर बैठकर हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान तशरीफ लाए हैं, ये विक्टोरियन एज की निशानी है। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी जनाब मुज़फ़्फ़र अली, मेहमान एज़ाज़ी मैडम स्नेहलता श्रीवास्तव, मैडम अजय, मैडम विजय सिन्हा और जनाब अजय चौधरी साहब IPS हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। जानो दिल से तेरे जलवों के परस्तारों में थे। पहला सबक तूने पढ़ाया था हमें, किस तरह जीते हैं तूने ही बताया था। 135 साल पुराने राइडिंग स्क्वाड के साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान पंडाल में दाखिल हो चुके हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 135 साल पुराना ये राइडिंग स्क्वाड है। और हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को उनके शाया निशान एक तरह से गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। इस राइडिंग स्क्वाड के कप्तान मोहम्मद उमैर, इन्होंने स्टेट और रीजनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में बहुत से ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अलीम वसीम, सैयद अलीम, अमानिया कादरी और लाइबा खां इसके अहम अराकीन हैं। अलीगढ़ आज फिर एक तारीख लिख रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 104 साल तारीख में पहली मर्तबा एक खातून वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून बस जश्न सर सैयद की सदारत फरमा रही हैं। अलीगढ़ के एक माए-नाज़ सपूत जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब पद्मश्री हमारे मेहमानों खुसूसी की हैसियत से डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। तो वहीं जनाब अजय चौधरी साहब IPS अलीगढ़ के एक और माए-नाज़ सपूत और मैडम जया वर्मा सिन्हा IAS, मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव IAS बतौर मेहमान एजाजी बज़्म सर सैयद को रोशन और करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। ये नज़ारा दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं मिल सकता कि दुनिया की कोई और यूनिवर्सिटी ये राइडिंग स्क्वाड नहीं रखती जो अलीगढ़ की शान इम्तियाज है। ख़वातीन हज़रात, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, वाइस चांसलर मोहतरमा नईमा खातून साहिबा, हमारे मेहमान एजाजी अजय चौधरी साहब IPS, मोहतरमा जया वर्मा सिन्हा IRTS, जनाब मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव IAS। ये तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर अपना मकाम ले रहे हैं। रोशन है तेरी अंजुमन, हश्र के दिन तक फला ला रहे तेरा चमन, तेरे पैमानों में लर्ज़ा है शराबे इल्म फन। Please take your seats. Ladies and gentlemen, I extend a very warm and hearty welcome to each one of you, especially the Aligarh fraternity across the globe watching this historical 207th birth anniversary celebration of the great founder Sir Syed Ahmad Khan. ख़वातीन हज़रात, बानी दरगाह सर सैयद अलैहिर्रहमा की 207वीं यौम विलादत की इस अजीम उश्शान तकरीब में मैं दिल की गहराइयों से आप सबको और दुनिया भर में फैले हुए फर्जंदान अली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना पहला चांसलर बेगम सुल्तान जहाँ को मुंतखब किया था। आज 104 साल तारीख़ में
मोहतरमा नईमा खातून साहिबा बहैसियत खातून वाइस चांसलर पहली मरतबा जश्न सर सैयद की सदारत फरमा रही हैं। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि अलीगढ़ के दो अहम सपूत जनाब मुजफ्फर अली साहब, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे एक और माया नाज सपूत अलीगढ़ से MBA करने वाले जनाब अजय चौधरी साहब IPS, जो इस वक्त स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक हैं दिल्ली पुलिस में, तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे लिए खुशनसीबी की एक और बात यह है कि मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव IAS, जो पहली लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल है, पहली खातून सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा 2017 में हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और पहली रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन मिस जया वर्मा सिन्हा IRTS हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। Upholding the glorious tradition of this great seat of learning and to start the program in an auspicious manner, we begin with the recitation from the Holy Quran. May I request, गुजारिश करूंगा जनाब कारी वसीम अहमद साहब से कि वो आएँ और एक खूबसूरत आगाज़ आज के इस जश्न सर सैयद को दें। जनाब वसीम अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम वमलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिन الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما। صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह खैरन कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Esteemed Chief Guest जनाब मुजफ्फर अली साहब, Honorable Vice Chancellor AMU Professor Naima Khatun Sahiba, Guests of Honor Madam Snehlata Shrivastava, Madam Jaya Verma Sinha, and our very own Mr. Ajay Chaudhary, AMU Registrar Mr. Muhammad Imran, Dean Students Welfare Professor Rafiuddin, dignitaries of the dais, officers of the university, members of the AMU Court, Academic Council and Executive Council, worldwide AMU alumni watching the live webcast, retired teachers, faculty, staff, students, ladies and gentlemen, आप सबको जश्न यौम सर सैयद की पुरखुलूस मुबारकबाद दिल की अमीक गहराइयों से। Ladies and gentlemen, it was the message of Sir Syed to shun blind imitation and to embrace innovation. This dais today here indicates just that his institution, the Aligarh Muslim University, has adapted to change, that AMU does what is required to espouse modern scientific education, and that we move with time. Today my heart swells with pride, my face beams with happiness, and this I say on behalf of the entire women folk here, and also my soul bows in gratitude to the Almighty.
that the first woman Vice Chancellor of AMU, Professor Naima Khatoon, is presiding this ceremony of the Sir Syed Day commemorative meet. This is also the first time that the composition of dignitaries on the dais here is truly representative of a planet 50-50. We are moving even towards gender equality. We have with us Madam Snehlata Srivastava, the first woman Joint Secretary of the Lok Sabha, and Madam Jaya Verma Sinha, the first woman chairperson of the Railway Board of India in its 112-year history. We are very glad to also be joined by one of our very own, Mr. Ajay Chaudhary, an IPS officer and an author. And last but not the least, the esteemed chief guest of this morning, Janab Muzaffar Ali Sahab. Yet again, the Muzaffar Ali of Umrao Jan fame, the Muzaffar Ali of the House of Kotwara fame, the Muzaffar Ali of Gaman, Agaman and Anjuman fame, the Muzaffar Ali of Duar Pe Rozi fame, and the Muzaffar Ali of Zikr, an autobiography which goes for a considerable span of time through Aligarh when he was here as a student. Ladies and gentlemen, I will request AMU Registrar, Mr. Muhammad Imran Sahab, to deliver a welcome address that befits this august gathering. Chief guest for today, Janab Muzaffar Ali Sahab, Honorable Vice Chancellor, Professor Naima Khatoon, guests of honor, Madam Snehlata Srivastav, Madam Jaya Verma Sinha, and Janab Ajay Chaudhary Sahab, Professor Francis Pritchett, DSW Professor Rafiuddin Sahab, officers of the university, members of the court, executive council and academic council, faculty members, staff, dear students, other esteemed guests, friends. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you on this momentous occasion of the Sir Syed Day Commemoration Celebration 2024. Ladies and gentlemen, we are gathered here today to mark an important annual milestone in our shared duty of remembering with gratitude the visionary founder of this great seat of learning and of rededicating ourselves to his idea of education and humanism. It is my privilege to be extending a warm welcome to all present. First and foremost, I welcome our chief guest. We are fortunate to have in our midst Janab Muzaffar Ali Sahab, who in his various roles as filmmaker, poet, artist, music lover, fashion designer, revivalist and social worker is well known to all of us. The excellence of this returning old boy of AMU spans many fields, and as a polymath, he embodies the spirit of limitless potential of the human spirit. Your presence here means a lot to us, sir, and we look forward to your enlightening address today. Thank you for taking the time out to grace this occasion. As guests of honor, we are privileged to have three very distinguished civil servants with us. Snehlata Srivastav ma'am is a 1982 batch IAS officer who, as we just heard, has held several senior positions with the government of Madhya Pradesh as well as the government of India. She has the distinction of being the first and so far the only woman to hold the position of the Secretary General of the Lok Sabha. Thank you, ma'am, for joining us today. We also have with us Jaya Verma Sinha ma'am, who is a 1988 batch IRTS officer and who has served as the first woman chairperson of the Railway Board. She has distinguished herself through several challenging assignments, and her experience in public service philosophy will certainly inspire the young ones seated before us here today. Thank you, ma'am, for being a part of today's event. And as the discerning audience would have noticed, the list of firsts for women is completed by our very own Vice Chancellor. Let me also extend a hearty welcome to another stellar officer, Ajay Chaudhary, sir, who belongs to the 1996 IPS batch and is currently posted as Special Commissioner Traffic, Delhi Police. While his approach to law enforcement has been community and innovation oriented, he has demonstrated that trust is the greatest public good. He very ably also wears a literary hat, and his creative public spirit will surely be one of the highlights of today's program. He is also an Aligarh, and sir, that gives us the added joy of welcoming you today. I also welcome the very distinguished Professor Francis Pritchett, Professor Emerita of Modern Indic Languages at Columbia University and the recipient of this year's Sir Syed International Award. Thank you, ma'am, for joining us even at the very late hours of where you are. I also welcome the representatives of the Ghalib Institute, Delhi, who are the recipients of this year's Sir Syed National Award.
I welcome Professor Naima Khatun and her team members, the Dean of Students' Welfare, Professor Rafiuddin, Finance Officer, Professor Mohsin Khan, Controller of Exams, Dr. Mujibullah Zubairi, Proctor, Professor Wasim Ali, Librarian, Professor Nishad Fatima Zaidi, Members in Charges, OSDs, Principals of Colleges, Deans of Faculties, Chairpersons of Departments of Studies, Directors of Centers, Provosts of Halls of Residence, Coordinators CEC, faculty members, non-teaching staff, retired teachers, and students. A special welcome is also due to all friends of AMU who are watching this program through live streaming. Ladies and gentlemen, today we honor the memory of Sir Syed, whose vision, action, persistence through suffering and action has played and continues to play a part in what we in our lives cherish as beautiful. His attributes such as love for learning, constant inquisitiveness, keen eye for observation, meticulous research ability, attention to detail, thinking high and not settling for anything less, and concern for future generations casts a debt on us, which I have no doubt that this august gathering would pay in part today. I feel it my duty to share what he wrote to Raja Jayakishan Das from London on 9th November 1969. The fate of Hindustan solely depends on the kind of system, good or bad, of education we will have. Keep a watchful and judicious eye on that. Take truth and public welfare as your only guide. Ladies and gentlemen, I repeat that. Take truth and public welfare as your only guide. With these words, I once again welcome all of you and wish you a great day today. We hope you will take away a lot from today's program and, of course, the inspiring rendition of the AMU Tarana. Thank you and Jai Hind. Thank you very much. That was AMU Registrar, Mr. Muhammad Imran, delivering a welcome address. And we must also at this point of time acknowledge all the hard work that he too has been putting in for the success of this program. Ladies and gentlemen, we have been honoring personalities of international repute who have worked tirelessly towards the mission furtherance of Sir Syed Ahmad Khan. The Sir Syed National and International Excellence Awards, worth a cash prize of 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively, have been bestowed upon such personalities for the past more than a decade now. In the past, David Lelieveld, Christian W. Troll, Barbara Metcalf, and the likes of Gail Minogue have received these Sir Syed International Excellence Awards. We are very proud to bestow the Sir Syed Excellence Award International, worth a cash prize of 2 lakh rupees, to Professor Francis W. Pritchett, an Emeritus Professor of South Asian Literature and Modern Indic Languages at the Department of Middle Eastern, South Asian and African Studies, University of Columbia, New York. Professor Pritchett has joined us online. We can see her, and she will be delivering her acceptance speech while it is past midnight, 1:30 a.m. in her house at New York. She is joining us all here in Aligarh. Professor Pritchett is there as I read her citation. Seldom does one come across a profound scholar, erudite critic, and proficient translator who, despite being a non-native speaker of a language, occupies oneself fully with the study of 2 distinguished poets of the acquired language. It is what Professor Francis Pritchett, an Emerita Professor of South Asian Literature and Modern Indic Languages at the University of Columbia, does with remarkable ease. She has made the 2 trailblazing poets, Mir Taqi Mir and Mirza Asadullah Khan Ghalib, the object of a single pristine critical gaze. Professor Pritchett received her postgraduate degree from the University of California at Berkeley and completed her PhD from the University of Chicago in South Asian Languages and Civilizations. She taught at Columbia from 1982 to 2013 and engaged with several research-oriented projects that brought her fame worldwide. She has a deep understanding of Muslim issues in the context of the Indian subcontinent. Some of her works on Indian cultural traditions of India include translations of some noteworthy Hindi literary works too. By bestowing Professor Francis W. Pritchett
With this year's International Sir Syed Excellence Award, the Aligarh Muslim University feels honored as her profound studies carry the fruits of academic rigor and critical equity and lend authenticity and credibility to South Asian studies. I request now Professor Frances W. Pritchett, joining us from New York, to kindly deliver her acceptance speech. Ladies and gentlemen, Professor Frances W. Pritchett. All gathered today to do honor to Sir Syed Ahmad Khan, who richly deserves the honor for his creativity, his commitment and hard work, and above all, his clarity of vision. His power to imagine new realities, like the Aligarh Muslim University that we are so proud of today, and then bring them into being. I want to offer him a brief tribute in the form of a share of Ghalib's that captures this combination of qualities most elegantly. So here's Ghalib. Bakshe hai jalwa gul, bakshe hai jalwa gul, zauq-e tamasha Ghalib. Bakshe hai jalwa gul, zauq-e tamasha Ghalib. Chasham ko chahiye har rang mein va ho jana. And I hardly need to translate it, but perhaps there is a few people who would profit by a literal translation. The radiance of the rose bestows a taste for spectacle, Ghalib. The eye should, in every aspect or condition or literally color, become open. And so you can see instantly how the second Misra changes the feel of things completely. The first Misra is all strolling around in a beautiful garden, being immersed in the radiance of the rose and admiring the zauq-e tamasha, which has been vouchsafed to you, bakshna. And then the second Misra is an altogether grimmer and bleaker affair, because chahiye, look at the elements of it. The chahiye has a need or even a moral imperative, perhaps, and it's a duty incumbent upon you to do what? To har rang mein, in every situation, no matter what it may be, no matter how dark or awful or unpromising or ominous it may be, to keep your eyes open. And then we have va ho jana, which is the spectacle is doesn't happen automatically. It becomes open. The eye becomes open. So it has to be something that you do self-consciously and achieve. And you looked at the zauq-e tamasha with a very different eye in the second Misra, because it's not necessarily a tamasha that you're looking at all. So this is the spirit of Sir Syed, and this is the achievement that he was able to blend in his temperament and his personality and his work, both the first Misra of Ghalib's share and the second Misra of Ghalib's share. And not many of us can do that as effectively as he has done, but we can all try. And so let me just close by saying, I thank you very much for the award you have given me. It's a deep honor, and I very much appreciate it, and I will try to be worthy of it in my future life and work, and in the spirit of Sir Syed. Thank you.
Thank you. Thank you so very much, Professor Francis W. Pritchett, for that acceptance speech, for that sweet rendering of yours of a couplet from Ghalib and linking it with Sir Syed, his philosophy, his contributions, and history. We wish you the very best for your future life, for your academic endeavors, and also how kindly you have been furthering the mission of Sir Syed. Thank you so much. I now request the Honorable Vice Chancellor AMU and our Chief Guest to kindly confer upon Professor Francis W. Pritchett the Sir Syed International Excellence Award 2024. It carries a citation, a plaque of honor, and a check, cash prize of 2 lakh rupees. So there it is, Professor Pritchett. You can see your award, and you can see the AMU Vice Chancellor, Professor Naima Khatoon, joined by our Chief Guest and guests of honor, conferring this award upon you from here in Aligarh. And thousands of students and teachers and staff and members of the Aligarh Biradri have joined us physically here to confer this award upon you. Many congratulations. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we now move on to the next category of awards, which is for the Sir Syed National Excellence Award in the institutional category. In the past, again, it has been conferred upon reputed institutions like the Darul Musannifin Azamgarh, the Anjuman-e-Islam Mumbai, and the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi. This year, the Sir Syed National Excellence Award is being conferred upon the Ghalib Institute, New Delhi. I request the Director of the Ghalib Institute, New Delhi, Dr. Idris Ahmed Saab, to kindly come upon the stage, take his place of honor as I read the citation of the Sir Syed Excellence Award 2024, carrying a cash prize of 1 lakh rupees, conferred by the Aligarh Muslim University on the Ghalib Institute. Not many Urdu literary and cultural organizations in the subcontinent could vie with Ghalib Institute, New Delhi, as far as academic rigor-filled publications, widely respected annual awards, thought-provoking international and national seminars, poetic symposium, academic deliberations on new books, and theatrical presentations are concerned. The institute, established by a trust in 1971, is committed to promoting Urdu literature, composite culture, and cultural pluralism. Housed in the sprawling Aiwan-e-Ghalib, the institute has a well-stocked library, seminar hall, and museum with rare manuscripts and documents. It has almost all notable publications on Ghalib and Urdu scholars and researchers. It confers awards upon 7 distinguished Urdu and Persian scholars every year and publishes scholarly books regularly. It has brought out more than 300 titles so far. Besides organizing the Ghalib International Seminar, the Institute holds seminars and book discussions round the year. It exclusively organizes a national symposium of research scholars of Urdu literature annually. One of the significant initiatives of this institute is its drama group, Hum Sab, established in 1974. In the post-independence era, it is the first organized effort to restore the glory of Urdu theatre, having staged 40 plays so far. Ghalib Institute also runs 6-month certificate courses in Urdu and Persian languages. The Aligarh Muslim University feels a sense of fulfillment in acknowledging the distinguished services rendered by the Institute and confers the National Sir Syed Excellence Award 2024 on it. I will now request Dr. Idris Ahmed, Director of the Ghalib Institute, to kindly deliver his acceptance speech. अस्सलामुअलैकुम काबिल सद एहतराम प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
आली जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, प्रोफेसर शाफ़िक़ क़िदवाई साहब, स्टेज और हॉल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरी और पूरी उर्दू दुनिया के लिए खुशी का मौका है कि मुल्क की एक मुअज़्ज़ज़ दानिशगाह जिसने हर मैदान में अपने तरबियत याफ्ता अफराद के ज़रिए मुल्क व कौम का नाम रोशन किया है, गालिब इंस्टीट्यूट को इनाम पेश कर रही है। गालिब इंस्टीट्यूट हर साल ख़ुद अदब और सक़ाफ़ती ख़िदमात के लिए 6 अहम अफराद की खिदमत पे इनामात पेश करता है। ये पहला मौका है जब ये इदारा एक मुअज़्ज़ज़ इदारे से ख़राज तहसीन वसूल कर रहा है। 1969 में जब गालिब की वफ़ात को 100 बरस मुकम्मल हुए तो पूरे बर सग़ीर में उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। बेशुमार रसायल के ख़ुसूसी नंबर और गालिब से मुताल्लिक़ अहम तसानीफ़ सामने आईं। उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी और जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो उस वक्त के कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन तीनों हज़रात की कोशिशों से गालिब की 100 साला यादगार बड़ी शान शौकत से मनाई गई और गालिब इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया। गालिब इंस्टीट्यूट अब तक 150 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार, 100 से ज़ायद आलमी और कुल हिंद मुशायरों के इनेकाद कर चुका है और 200 से ज़ायद किताबें इस इदारे से शाया हो चुकी हैं, जिसमें गालिब, मासरीन गालिब, मुहक़्क़ीन गालिब, नाक़दीन गालिब और मासिर अदब से मुताल्लिक़ अहम किताबें शामिल हैं। ऐवान गालिब में 2 पुरकशिश ऑडिटोरियम मौजूद हैं जिनमें अक्सर व बेशतर सक़ाफ़ती तक़रीबात मुनक़्क़िद होती रहती हैं। इसके अलावा फ़खरुद्दीन अली अहमद रिसर्च लाइब्रेरी, जिसमें गालिब से मुताल्लिक़ 3000 से ज़ायद किताबें, नीज़ लाइब्रेरी मजमूई तौर पर 25,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। बेगम आबिदा अहमद गालिब म्यूज़ियम भी इस इदारे का अहम हिस्सा है, जिसमें गालिब अहद गालिब की नादिर अशिया मौजूद हैं। गालिब के ताल्लुक़ से ये अपनी नौइयत का वाहिद म्यूज़ियम है। गालिब इंस्टीट्यूट से निकलने वाला शशमाही इल्मी रिसाला गालिबनामा इल्मी दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है। गालिब इंस्टीट्यूट की ज़ैली शाख हमसब ड्रामा ग्रुप उर्दू ड्रामा और थिएटर को तरक्की देने के मकसद से मुस्तकिल सरगर्म है। इस ग्रुप के ज़ेर एहतमाम हर साल ड्रामा फेस्टिवल, स्ट्रीट प्ले, क़िस्सा ख़ानी, दास्तान गोई नीज़ दिगर सक़ाफ़ती तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से थिएटर ग्रुप शिरकत करते हैं। गालिब इंस्टीट्यूट की अहम सरगर्मी यह है कि दिल्ली से बाहर मुल्क के दूसरे ख़ित्तों में भी गालिब से मुताल्लिक़ सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। चुनांचे कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, आगरा, जमशेदपुर, रामपुर, उदयपुर, पुणे, बेंगलोर, श्रीनगर, सिलचर, आसाम वगैरह में गालिब से मुताल्लिक़ निहायत अहम सेमिनार मुनक़्क़िद हो चुके हैं और इन सेमिनारों के मकाले किताबी शक्ल में मंजराम पर आ चुके हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले बरस सारी दुनिया में इंटरनेट पर शायरों में सबसे ज़्यादा गालिब को पढ़ा गया। गालिब इंस्टीट्यूट ने अपने ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी भी ली है कि हिंदुस्तान की हर अहम ज़ुबान में दीवान गालिब को शाया किया जाए। इस सिलसिले में देवनागरी, अंग्रेज़ी, कश्मीरी, पंजाबी, अवधी में दीवान गालिब शाया हो चुके हैं। तमिल, कन्नड़ और बंगला ज़ुबान में भी अनकरीब दीवान गालिब शाया होकर मंजराम पर आएगा। गालिब इंस्टीट्यूट की अहम सरगर्मी में इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर सेमिनार ख़ास अहमियत का हामिल है, जिसमें बैरून हिंद के अलावा हिंदुस्तान की तकरीबन 50 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शरीक होकर अपने मकालात पेश करते हैं। दौर हाज़िर में उर्दू और फ़ारसी के हवाले से हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा रिसर्च स्कॉलर गालिब सेमिनार है। गालिब इंस्टीट्यूट हर साल उर्दू के किसी अहम एक स्कॉलर की अदबी खिदमात के इतराफ़ में इस्तक़बालिया मुनक़्क़िद करता है, जिसमें मुताल्लिक़ा शख्सियत की खिदमात में 50,000 रुपये, शाल, मेमेंटो और सिपासनामा पेश किया जाता है। इस मौके पर एक किताब भी शाया की जाती है जिससे उस शख्सियत की इल्मी आसार का तारुफ़ मक़सूद होता है। हर साल दिसंबर में गालिब के यौम विलादत के मुनासबत से बैनुल-अक़वामी गालिब तक़रीबात का अहतमाम होता है, जिसमें आलमी मुशायरा, बैनुल-अक़वामी गालिब सेमिनार, ड्रामा और शाम गज़ल मुनक़्क़िद की जाती है। इल्मी दुनिया में इस सेमिनार का जो एतबार और मर्तबा है वो अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। गालिब इंस्टीट्यूट की सरगर्मियों का ये एक निहायत मुख्तसर तारुफ़ है और मुस्तक़बिल में बहुत सारे मंसूबे हैं जिनसे उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की में पेश रफ्त होगी, जिनकी तफसील का ये मौका नहीं है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली ख़ातून वाइस चांसलर
प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा, सर सैयद एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब और यूनिवर्सिटी के तमाम अरकान और यहाँ पर मौजूद हर शख्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी काविशों से गालिब इंस्टीट्यूट को गालिब यूनिवर्सिटी का बावक़ार सर सैयद नेशनल एक्सेलेंस इनाम हासिल हुआ है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इदरीस अहमद साहब। और अब मैं गुजारिश करूँगी मोहतरमा शेखतुल जामिया नईमा खातून साहिबा से और हमारे तमाम मेहमान आने ज़ी वक़ार से कि गालिब एकेडमी न्यू दिल्ली को इस अवार्ड से नवाजें। जिसमें एक सिपासनामा और नकदी इनाम 1 लाख रुपए। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब इदरीस अहमद साहब और तमाम गालिब एकेडमी के अरकान। और हमारी उम्मीद है कि ये अवार्ड भी आपके लिए बाबरकत साबित होगा और आपकी ये तशरीफ़ आवरी भी हमारे लिए बाबरकत साबित होगी। ख़वातीन हज़रात, हज़ारों तलबा और हज़ारों तालिबात इस सख्त गर्मी के अंदर जिस संजीदगी के साथ, जिस नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं, वो सिर्फ़ अलीगढ़ में मुमकिन है। अलीगढ़ के ये तलबा हैं, यही पहचान है इनकी, जिधर से भी गुज़रते हैं सलीक़ा छोड़ जाते हैं। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि इस इदारे की बुनियाद सर सैयद ने पहले ही दिन से फ्री इंक्वायरी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस और प्योर मोरालिटी पे रखी थी। अब हमारे तलबा और तालिबात सर सैयद पर कुछ बात करना चाहेंगे, लेकिन ये बता दूं कि यहाँ जो तालिब इल्म आता है, जब एनरोलमेंट के वक्त तो उसका नाम शब्बीर होता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो जोश मलिहाबादी बनता है। एनरोलमेंट के वक्त इसरारुल हक होता है, लेकिन जब जाता है तो मजाज लखनवी बन जाता है। हमारे तलबा में लाला अमरनाथ ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और क्रिकेट के भीष्म पितामह कहलाए। हॉकी में ध्यानचंद ने दाखिला लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और हॉकी के जादूगर कहलाए। ये अलीगढ़ की कशिश है, ये है अलीगढ़ का अंदाज। आज भी इस मुल्क के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में चंद्रयान 1 और 2 की कामयाबी के अंदर अलीगढ़ की खुशबू मिर्ज़ा, जिन्होंने टॉप किया बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, चंद्रयान चेकआउट टीम फर्स्ट की लीडर रही हैं। सोनाली जैन हमारी बीटेक की तालिबा, गोल्ड मेडलिस्ट, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से वाबस्ता हैं। बहुत सारे एजाज़ात अलीगढ़ के तलबा ने हासिल किए हैं। आइए अब हम अपनी एक तालिबा जुनैरा हबीब अलवी, जो BA हिस्ट्री की तालिबा हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और बानी दरगाह सर सैयद अलैहि रहमा को खिराज अक़ीदत पेश करें। जुनैरा हबीब अलवी। Quote, I say with conviction that in all matters of everyday life, the Hindus and the Muslims really belong to one community as the children of the soil, and not two. And the progress of the country is only possible if we have a union of hearts, mutual sympathy, and love, unquote. Said the man whose legacy would transcend beyond centuries. Assalamu alaikum, Honorable Vice Chancellor, Professor Naeema Khatoon, Honorable Chief Guest, Janab Muzaffar Ali Sahab, Guests of Honor, Srimati Snehlata Srivastav, Srimati Jaya Verma Sinha, and Shri Ajay Chaudhary. Respected Registrar, Janab Muhammad Imran Sahab, Deans of all faculties, esteemed faculty members, and fellow students. I, Zunaira Habib Alvi, a 5th semester student of history, stand here to address you all on the 207th birth anniversary of Sir Syed Ahmad Khan. Neither the charade of the Western liberal thought nor the grandeurs of their universities was ever imagined to get translated into words known to the Indian masses. Such an image was to remain an abstract from a far-off land of civility and sophistication until a man decided to paint it for his people. Sir Syed Ahmad Khan brought into the narrative a hope to piece together a future that would not depend on sword for its sustenance, but write itself with an ink that would outlive the stains of blood and hatred. Born in 1817 as Syed Ahmad, his familial identity was largely rooted in and manifested through its connections to the Mughal court. Upon the demise of his father, Sayyid Muhammad Muttaqi, Sir Syed was conferred the title of Jawwadud Dawla Arif Jung
by the last reigning Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar II. From the ground where fell the last pieces of the Mughal crown, Sir Syed built a legacy that would outlast many other kings and governments to come. Sir Syed's participation at this juncture in the course of Indian history with attempts to reconcile a people torn by distrust and intolerance would eventually prove instrumental in the creation of an educated class with revolutionary and nationalist undertones. His efforts at bridging communities and promoting religious harmony were aimed at the emancipation of Indians from the clutches of moral and intellectual slavery of the British rule. Sir Syed's belief in education as a precondition for social reform and religious rapprochement provided the primary impetus to the concepts and temporalities which would later develop as central arguments, supporting the need for modern educational institutions for Indians. Institutions that would in turn become the foci of socio-religious reconciliation with national integration. The college's structure and curriculum were not merely academic or architectural constructs, rather it was a manifesto of Sir Syed's philosophy. Sir Syed's emphasis on intellectual and rational training ta'aleem and moral instructions tarbiyat eventually culminated in the foundation of a new era of education in India. His efforts later on inspired and encouraged a whole new movement of women's educational reforms at Aligarh, headed by Sheikh Abdullah, whose endeavors led to the foundation of Women's College, the crowning jewel of Sir Syed's Aligarh movement. Sir Syed's initial approach, which encouraged individual judgment in assessing Islamic sources through a more rational and empirical outlook, gradually shifted towards fostering student unity as the basis for communal mobilization. He viewed communal solidarity as an expression of unity of God. This shift was evident in the changing ratio of Muslim to non-Muslim students at the college, with non-Muslims initially outnumbering Sir Syed's co-religionists during the early years of its establishment. Sir Syed's most endearing legacy, Aligarh Muslim University, today stands as a monumental testament to his visionary ideals and unflinching determination to education and social reform. What began as a modest aspiration has now transformed into a pillar of guidance and progress for thousands of students, alumni, and faculty who continue to be inspired by his spirit, charm, and character. And it is on us, the students of this university, to carry forward this very legacy. Thank you. Thank you very much, Zunaira, for that very confident speech. I pray from here today that may all the girl students of AMU go the Qurratul Ain Haider way, the Ismat Chokhtai way, and the Kusum Ansal way in Urdu Hindi literature. May they go the Anwara Taimur way and the Mohsina Qidwai way in positive politics. May they go the Zarina Hashmi way in the Metropolitan Museum in New York. May they go the Hashima Hassan way in NASA. And may they go the Khushbu Mirza way in ISRO. Thank you very much. ख़वातीन व हज़रात, इससे कबल कि मैं उर्दू तकरीर के लिए जनाब सारिम अयूबी साहब तालिब इल्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को यहाँ दावत सुखन दूँ, I would like to evoke this small sentiment with the students of the Aligarh Muslim University. हम सबको मालूम है कि सर सैयद अलीगढ़ के इन धूल भरे मैदानों में एक ऐसे इदारे की बिना का ख्वाब देखा करते थे जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह पर हो। इसके लिए उन्होंने एक लंबा सफ़र 17 महीनों का इंग्लिस्तान का किया, और जब वो वहाँ कोई ऐसे वाक़यात देखा करते थे जो कि इस मुल्क में मौजूद अपने रफ़्क़ा को और अपने लोगों को बताना चाहते थे, तो अपने सफ़रनामों और ख़ुतूत में उन वाक़यात को बयान किया करते थे। सर सैयद की कलम से दर्ज एक ऐसा ही वाक़या हमें मिलता है कि मैं अपने लड़कों के लिए एक ऐसे कॉलेज का ख्वाब देखता हूँ जिसमें वो ऐसे रहायशी हॉस्टल्स में रहे होंगे जो मस्जिदों से मुंसलिक होंगे,
जिसमें वो महज़्ज़ब लिबास पहना करेंगे जो कि एक चोगा और तुर्की टोपी होगा, और जिसमें वो बात बात पे गाली गलौच नहीं किया करेंगे, और जिसमें वो छोटे छोटे झगड़े और निफाक में अपना वक्त नहीं बर्बाद किया करेंगे। मैं इन्हीं जज्बात के साथ और इस याद दहानी के साथ सारे मयूबी को दावत सुखन देती हूँ। होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवगर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। मोहतरम सदर ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बानी दरसगाह सर सैयद अलैहिर्रहमा के 207वें यौम विलादत के मौके पर मैं आप तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, 1857 के वक्त मुसलमानों के हालात पर गौर कीजिए। मुग़लिया सल्तनत का सूरज गुरूब हो चुका था। मुसलमानों की किस्मत के सितारे सियाह बादलों में रुपोश हो चुके थे। अंग्रेज़ मुसलमानों से गदर का भरपूर इंतकाम ले रहे थे, जिसके वाक़यात तारीख़ के सफ़हात में खून से लिखे गए। इन हालात में अल्लाह का एक बंदा उठता है और अपनी कौम को जगाता है। उसे अपनी कौम की तबाही और ज़बूहाली न रातों को सोने देती है और न दिन में चैन से बैठने देती है। ये बंदा अपनी कौम के हाथों में तलवारों के बजाय कलम देता है और मैदान अमल में सफ बस्ता करने की जिद्दोजहद करता है। एक तरफ कौम को झिझोड़ता है तो दूसरी तरफ असबाबे बगावत हिंद लिखकर बरसर इक़्तिदार अंग्रेज़ों को हक़ाइक़ से रोशनास कराता है। मगर अफसोस कि उसकी बदकिस्मत कौम उस पर इल्ज़ामात के अंबार लगाती है, उसे गद्दार, चापलूस और मफाद परस्त कहती है। इतने तानों, दुश्मन तराजियों और फतवों की चोट सहते हुए भी अपने मिशन पर जमे रहने की हिम्मत सर सैयद जैसे मर्द बाहौसला में ही थी। हाज़रीन, सर सैयद का मिशन क्या था? उनकी कौम दकियानूसी ख्यालात और मोशिगाफियों में उलझे रहने के बजाय जदीद तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो, साइंस के मैदान में आगे बढ़े और दूसरी कौमों के बराबर खड़ी हो जाए। और तारीख गवाह है कि उन्होंने इस अजीम मिशन की खातिर तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजारों मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दर दर की ठोकरें खाई, जिल्लतें सही, मगर कौम की तालीमी तरक्की के लिए जिस अजीम इदारे की तामीर का ख्वाब उन्होंने देखा था, उसे मुकम्मल किए बिना न छोड़ा। ख़वातीन व हज़रात, सर सैयद अलैहिर्रहमा की शख्सियत मुख्तलिफ औसाफ की हामिल थी। वो एक बेहतरीन मुसन्निफ, मुकर्रिर, मुफस्सिर कुरान, बुलंद पाया इंशा पर्दास, माहिर तारीखदा और सियासतदान थे। उन्होंने कलम व अमल से ज़िंदगी के तमाम शोबों पर लाफानी नुकूश छोड़े हैं। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने उस दौर की दम तोड़ती सहाफ़त को तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए नई ज़िंदगी बख्शी। उर्दू ज़बान व अदब को इश्क व माशूक की भूल भुलैयों से निकाल कर कौमी इस्लाह का काम लिया। मुसलमानों के अंदर साइंसी रुझान के फ़रोग़ की खातिर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और इल्म के तश्न लबों के लिए गिरा कदर इल्मी सरमाया छोड़ा। हाज़रीन, बानी दरसगाह ने उस तारीकी में एमयू कॉलेज की शक्ल में जो चराग जलाया था, आज उसकी रोशनी दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने जो पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सूरत में हमें नज़र आता है। जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खू हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हजरात, आज जबकि हम बानी दरसगाह का यौम विलादत मना रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि उनके उस ख्वाब को याद करें जो उन्होंने बेदारी के आलम में देखा था। तालीमी और सियासी एतबार से एक तरक्की याफ्ता कौम का ख्वाब, जिस कौम के अफराद हालात का मुकाबला जोश से नहीं बल्कि होश से करना जानते हो, जिस कौम के अफराद आपसी तफर्रका बाजियों को भुलाकर सब की भलाई के लिए कोशा हों, जिस कौम के अफराद बिरादरान वतन को साथ लेकर चलें, जिस कौम के अफराद एक दर्दमंद दिल के मालिक हों, उनका दिल कौम की बदहाली पर बेचैन होता हो और न सिर्फ बेचैन होता हो
बल्कि उसे दुरुस्त करने के लिए मुतहर्रिको कोशा हूँ। इस कौम के तलबा के हाथों में कुरान और साइंस और सर पर ला इलाह का ताज हो। हाजरीन, बानी दरसगाह के इस ख्वाब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कौम की तालीमी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर कीजिए। आखिर क्या वजह है कि अलीगढ़ तहरीक की मुमताज़ कामयाबी के बावजूद भी हमारी कौम तालीम के मैदान में सबसे पीछे खड़ी है? आखिर क्या वजह है कि मैदान सियासत में इस कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं? कौम की एक बड़ी आबादी आज भी गुर्बत व इफलास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये कहना बेजा होगा कि मौजूदा हालात फिर से ज़माने गद्र की याद दिलाते हैं। फ़र्क बस इतना है कि उस दौर ने सर सैयद जैसा मुखलिस हमदर्द कौम पैदा किया था, जिसने कौम की इस्लाह का बार अपने मजबूत कांधों पर उठा लिया था। मगर आज हमारे दरमियान सर सैयद जैसा अजीम कायद और रहनुमा नज़र ही नहीं आता। मगर उम्मीद की एक किरण ज़रूर नज़र आती है। अगरचे सर सैयद नहीं, मगर उनकी दरसगाह से तरबियत याफ्ता हज़ारों लाखों अफराद दुनिया के कोने कोने में तो मौजूद हैं, जो कि सर सैयद के मिशन को जानते और समझते हैं और उससे अपने ताल्लुक़ का इजहार करते हैं। अगर ये अफराद, ये अलीग बिरादरी, ये चमने सर सैयद के मतवाले ठान लें तो कौम की इस कश्ती को भंवर से निकाल कर साहिल से मिला सकते हैं। ए मुहिब्बीन सर सैयद, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बानी दरसगाह के मिशन को याद करें और जो कोशिशें उन्होंने कौम की तालीमी तरक्की के लिए की थीं उन्हें फरामोश न करें। सर सैयद अलैहिर्रहमा के मिशन और अलीगढ़ तहरीक को लेकर आगे बढ़ें, तभी हम सर सैयद के सच्चे जानशीन और मुहिब्बीन कहलाने के लायक होंगे। अब मैं अपनी बात हज़ारों नेक तमन्नाओं और इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। तारीख ये दिल अब तो बहरहाल मिटेगी, हम शमे मोहब्बत की जलाने में लगे हैं। गुलशन में बहार आएगी फिर लौट के लोगों, हम सहरा को फिरदौस बनाने में लगे हैं, हम सहरा को फिरदौस बनाने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से लड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपने सारी मय्यूब को समाअत किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विमेंस एजुकेशन का परचम हमेशा से बुलंद रहा। 1906 में विमेंस कॉलेज कायम हुआ और इसके बानी पापा मियाँ शेख अब्दुल्ला को पद्म विभूषण से नवाजा गया और उसके बाद से आज तक ये काफ़िला कहीं रुका नहीं। कुर्रतुल-ऐन हैदर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, इस्मत चुगताई को पद्मश्री मिला। नावल की दुनिया हो, शायरी की दुनिया हो, कोई मैदान हो, अलीगढ़ की ख़वातीन आगे नज़र आती हैं। रशीद जहाँ बेगम, वही जहाँ बेगम, मुमताज़ जहाँ बेगम से लेकर यूनिवर्सिटी की माए नाज असातिज़ा में हमीदा सईदुल ज़फ़र, किश्वर शब्बीर, आबा लक्ष्मी सिंह, हमीदा अहमद, मुमताज़ जहाँ, मिसिस थॉमस से लेकर आज तक एक बड़ी कहकशां मौजूद है। हम अपने उस्ताद असातिज़ा की जानिब रुजू होंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ दो मुअज़्ज़िज़ खुशायन ऐलानात करना चाहता हूँ। हमारे साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरे साहब तशरीफ़ फरमाएं, इस्तकबाल कीजिए। हमारे साबिक़ प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल कीजिए। आइए हज़रात, हम गुजारिश करते हैं यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी की चेयरपर्सन प्रोफेसर ज़हरा मोहसिन से, जी हाँ, उसी मेडिकल कॉलेज से जिसने अशोक सेठ को पैदा किया, जो आज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम रखते हैं मैक्सिमम हार्ट सर्जरीज़ करने में। इसी मेडिकल कॉलेज की ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी की चेयरपर्सन प्रोफेसर ज़हरा मोहसिन को मैं शहरियार के इस शेर से मुखातिब करना चाहता हूँ। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। प्रोफेसर ज़हरा मोहसिन। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक अकील साहब। एस्टीम्ड गेस्ट्स, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम, esteemed and eminent faculty and dear students, a very good morning and assalamu alaikum. At this juncture, I will be not doing my duty if I do not mention that a maternal death occurs every 2 minutes and a newborn dies every minute. We still rank second as far as under 5 child mortality is concerned. 4
A380 jets with these mothers and children on board crash daily without creating headlines or a stir. My state still has a literacy rate of 77% for men and 57% for women. Although Sir Syed realized this 2 centuries ago, ladies and gentlemen, education and health are still our real issues. Ignorance is the mother of poverty, said this great man whose vision has made us what we are today. He began by spreading the light of knowledge, which is evident by his voluminous writings, his establishment of schools, first in Moradabad in 1858 and then in Ghazipur in 1863. Modeled after the Royal Society, the Scientific Society was founded in 1864 to translate Western work on science and art into Urdu. Continued effort further led to the establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental College, which now has become this great seat of learning. Sir Syed was in his childhood days home-taught by his mother, Mrs. Azizun Nisa Begum. She was his first teacher, and he realized the importance of a mother in sowing the seed of learning. Education is the best legacy that a parent can leave for his child. He published Social Intercourse of the Europeans with the Hindustanis by Captain MacDonald, that urged Indian men to educate their women and to treat them as equals. Critical to a nation's progress, women empowerment by providing education will kindle the light of learning each home. The Industrial Revolution was transforming the world, and Sir Syed believed the acquisition of the knowledge of science and the arts was the solution for our problems. Rational thinking and a modern outlook was at the heart of the Aligarh movement. He said, the study of nature in itself is a religious duty. The work of God cannot contradict the word of God. Today, although we have made immense progress in science technology, which has changed our lives, we still face the issues of climate change and cloning, only to realize how important it is to understand and respect natural laws. Interfaith understanding is the key to peace and progress. We eat the same crop, drink from the same rivers, and breathe the same air. We should try to combine our hearts and souls and act in unison, for only if united we can sustain. His teaching that every human being is composed of 2 elements, his faith, which he owes to God, and his moral sympathy that he owes to his fellow beings, is indeed very significant today. Dialogue, not discord, was his way to solve controversial issues. In his effort to bring social reforms, in the Aligarh Gazette, he had addressed many a time issues of polygamy, child marriage, sati, and segregation of widows. He believed that old rituals and regressive customs hindered human progress. Publishing the Tehzeebul Akhlaq, meaning the social reformer, was a step to spread awareness and promote reforms in society. Shattered by the death of his wife and followed by the untimely loss of his young daughter, he put great emphasis on the care of mothers and children. The light kindled by Sir Syed is now a torch that we hold only to take his mission forwards, to spread true and beneficent knowledge, health, empowerment, social justice, and progress will follow. I will end by quoting his famous words which adorn the entrance of our institution today. Oh, my dear children, you have reached a particular stage. Remember one thing, that when I undertook the task, there was criticism all around against me.
and life had become so difficult for me that I aged before my age. I lost my hair, my eyesight, but not my vision. My vision never dimmed. My determination never failed, and I built this institution for you, and I am sure you will carry the light of this institution far and wide. Darkness will disappear from all around. Thank you so much. Thank you very much, Professor Zahra Mohsin, for throwing light on this little known aspect of Sir Syed's life and philosophy. ख़वातीन व हज़रात, अभी हमने ज़िक्र किया मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के उन इब्नाए क़दीम और बनाते क़दीम का जिनको तमाम एज़ाज़ात से नवाजा गया है, ख़्वाह वो पद्मा अवार्ड्स हों, ख़्वाह वो ज्ञानपीठ अवार्ड हो और ख़्वाह वो साहित्य अकादमी अवार्ड हो. Our very own faculty here too is also doing excellent work in furthering the mission of Sir Syed. Our next speaker is Professor Shafiq Idwai, winner of the Sahitya Akademi Awards. He is a professor at the Department of Mass Comm and Journalism, Dean Faculty of Social Sciences, and a former MIC PRO, also the director of the Sir Syed Academy. And something very, very noteworthy about him is that only day before yesterday, his book, Sir Syed Ahmad Khan, Region, Religion and Nation, published by Routledge, figured at top number 5 position in the Amazon top charts of books in demand for sale. He has also written a book entitled Readings in Urdu Literature and Journalism, printed by the Cambridge University Press. मेरी गुजारिश है जनाब प्रोफेसर शाफिक इदवई साहब से उनके उर्दू खिताब के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया उस तारुफ का जिसका मैं क़तन मुस्तहक़ नहीं था. हज़रात, आज हम लोग एक ऐसे शख्स की याद मनाने को यहाँ सब हम लोग मौजूद हैं जिसने इस दुनिया को 126 साल पहले अलविदा कहा था. और आज हमने जो बज़्म यूनिवर्सिटी ने जो बज़्म सजाई है वो इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि अगर आप स्टेज पर नज़र डालें तो आपको एक ख़ास किस्म के इम्तियाज़ का अंदाज़ा होगा कि यहाँ 3 ख़वातीन ऐसी हैं जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट अमंग फर्स्ट. यहाँ पे हमारी वाइस चांसलर साहिबा हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर साहिबा हैं, और 2 हमारी जो मेहमान एज़ाज़ी हैं, एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट की पहली खातून सेक्रेटरी थी और दूसरी रेलवे बोर्ड की चेयरमैन थी. तो 3 फर्स्ट ख़वातीन यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं. सर सैयद को याद करने का ये तरीक़ा भी बहुत अहम है. सर सैयद के बारे में बहुत सी बातें कही गई. अभी मैं उस पर कुछ 2-3 वाक़े सर सैयद की ज़िंदगी का ज़िक्र करूँगा. और इस स्टेज पर हमारे ज़माने के बहुत अहम शख्सियत जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं आइकॉनिक फ़िगर मुज़फ़्फ़र अली साहब मौजूद हैं. उनकी शोहरत ज़ाहिर है उनकी फ़िल्म अमराव जान की और गमन की वजह से है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है उनकी जो असल अहमियत है वो तसव्वुफ़ को किस तरह से वो इंटरप्रेट कर रहे हैं. उनकी अभी आबीती शाये हुई ज़िक्र के नाम से जो पेंगुइन ने छापी है, उससे पहले उनकी तसव्वुफ़ पे किताब थी या अ लीफ टर्न येलो, ये ब्लूम्सबरी ने छापी थी. फिर एक उनका पर्चा निकलता है हू के नाम से, जहान खुसरो के नाम से जश्न करते हैं अंग्रेज़ी में से पर्चा निकलता है. तो उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स भी बहुत ही रिमार्केबल हैं. आर्टिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और दूसरे जो हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साबिक़ तालिब इल्म अजय कुमार साहब यहाँ मौजूद हैं. वो ज़ाहिर है पुलिस के अहदे पे तो है ही हैं, वही बहुत अहम बात है. इमरान साहब भी यहाँ मौजूद हैं. उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो ऑथर हैं. उनकी किताब का जो नावल है वो भी मेरी नज़र से गुजरा. तो इस लिहाज से ये जो आज बज़्म सजाई गई वो इस लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है कि इसमें मुख्तलिफ़ जहतों से जो इम्तियाज़ी पोजीशन रखते हैं उन लोगों को यहाँ जमा किया गया. जहाँ तक देखिए सर सैयद का सवाल है, अभी बहुत सी बातें कही जाएंगी और कही जाती रहीं. सर सैयद भी गालिब और मीर और आप बड़े बड़े राइटर्स को देखें, दे हैव बिकम इंडस्ट्री हो गए हैं. उन पर हज़ारों किताबें लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेंगी. अगर आप सर सैयद को समझना चाहें तो मुझे लगता है उसके लिए 2 इस्तिलाहें के ज़रिए आप शायद मैं अपनी बात को वादे कर सकता हूँ. एक तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है, यहाँ मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद हैं, अलवी साहब भी यहाँ मौजूद हैं. उसमें एक इस्तिलाह मिलती है तसव्वुफ़ की किताबों में, उसमें हम कहते हैं साहिब खैर कसीर, यानी एक ऐसा इंसान जो ऐसे कारनामे अंजाम दे जाता है कि जिसको गर्दिश ज़माना जिस पर असरअंदाज नहीं होती और वो हमेशा याद रखे जाते हैं, तो उसको हम साहिब खैर कसीर कहते हैं. क़ुर्रतुल हैदर का भी कई बार जिक्र हुआ. क़ुर्रतुल हैदर ने अपने एक मेमोइर्स में लिखा, सर सैयद का जिक्र किया और उनके लिए एक लक़ब इस्तेमाल किया. उन्होंने ख्वाजा खिज़्र कहा. ख्वाजा खिज़्र या हज़रत खिज़्र जो आप कहें, कुछ लोग उनको पैगम्बर भी समझते हैं, जानते हैं. तो हज़रत खिज़्र का काम होता है
भटके हुए लोगों को राह दिखाना। तो उन्होंने एक भटकी हुई कौम, एक हजीमत खोरदा कौम, एक शिकस्त खोरदा कौम को राह दिखाई और उसके लिए उन्होंने पूरी हिकमत अमली मुरतब की। सर सैयद को देखिए समझने के बहुत से ज़ाविये हैं। वो सिर्फ एक इदारे के बानी नहीं थे, वो भी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ थे। देखिए सर सैयद से पहले अगर आप हिंदुस्तान में नज़र डालें तो आपको लगेगा यानी अंग्रेज़ों की आमद से पहले यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी और 700-900 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही। और किस तरह का डेवलपमेंट हुआ कि सर सैयद के ज़माने से पहले जितने हमारे बड़े अकाबरीन थे, जो जितने बुजुर्ग थे या थिंकर्स थे, वो मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये लगता था कि अगर हम अक्सरियत में नहीं है, वी आर नॉट इन मेजॉरिटी, लेकिन रूलर जो है वो हमारी कौम का है, तो वो लोग ज़िंदगी गुजारते थे। पहली बार अंग्रेज़ों के बाद से ऐसा हुआ कि आप एक ऐसे प्लूरल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ आप अक्सरियत में भी नहीं है और हुक्मरान भी नहीं है, तो व्हाट इज़ टू बी डन, ये सर सैयद को समझने का मुझे लगता है बहुत बुनियादी हवाला है और इसमें कोई उनका शरीक और सहीम नहीं है। फिर सर सैयद ने हिकमत अमली बनाई। 19वीं सेंचुरी का अगर आप हिंदुस्तान देखें तो सिविल सोसाइटी बन रही है और पब्लिक इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं। राजा राम मोहन राय, चाहे आप कुशप चंद सेन का नाम लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। मुसलमानों के जो पहले पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे वो सर सैयद थे। सर सैयद ने सिविल सोसाइटी बन रही थी, अभी जिक्र किया गया, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए उसने सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। फिर उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट निकाला 1866 में, 1870 में तहज़ीबुल अखलाक निकाला। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को फ़रोग़ देने के लिए इदारे कायम किए। इटावा में नेटिव रीडिंग सोसाइटी कायम हुई तो उसमें उनका अहम रोल था। फिर इलाहाबाद में मोहम्मडन क्लब बना और इस तरह के बहुत से उन्होंने सिविल सोसाइटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं वो सर सैयद ने उसके दर आपके लिए वाह किए। ये तो सर सैयद ने फिर ज़ाहिर है 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया। सर सैयद के बारे में बस दो बातें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, यहाँ तालिब इल्म यहाँ मौजूद हैं तो उनको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि सर सैयद को अगर समझना है, उनके जो कोटेशंस हैं वो आप अभी बहुत से लोगों आपने किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन मुझे चूँकि कुछ ज़्यादा उनकी सर सैयद की चीज़ें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो मैं दो वाक़या आपके सामने रखता हूँ। पहला वाक़या ये है कि स्टूडेंट्स की सेल्फ रेस्पेक्ट का कितना ख्याल रखते थे। उन्होंने 1880 में एक एडिटोरियल लिखा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ से पहले आप लोगों के इल्म में होगा देवबंद कायम हो चुका था, तो देवबंद के बारे में उन्होंने एडिटोरियल लिखा और तारीफ़ की, मगर ये लिखा कि एक चीज़ में वो अलीगढ़ का इत्तिबा करें, अलीगढ़ की पैरवी करें। वो क्या चीज़ है? उन्होंने लिखा कि अलीगढ़ में बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, 1880 का एडिटोरियल है, और कहा यह जाता है कि अलीगढ़ जो थे, अलीगढ़ में सर सैयद ने सिर्फ शुरफा की इलीट क्लास की तालीम का इंतज़ाम किया, तो इलीट क्लास के जो तलबा थे वो स्कॉलरशिप से या फ्रीशिप लेके नहीं पढ़ते। उन्होंने लिखा हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अखराजात की किफ़ालत, यही लफ्ज़ है सर सैयद के, किफ़ालत यूनिवर्सिटी करती है, उस ज़माने में कमेटी थी, वो कमेटी करती है। तो वो किन लोगों के बच्चे थे ये ज़ाहिर आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो उनकी किफ़ालत करते हैं उनका नाम कहीं नहीं आता। अगर आप उन्होंने लिखा कि ये देवबंद में जब सालाना उनका जलसा होता है, रिपोर्ट होती है, इसके अलावा पता चलता है, ज़ाहिर आपको पता है मदरसों में खाना दूसरे जगहों से आता है, तो बच्चों को पता चलता है कि उनका कफ़ील कौन है, कौन उनको खाना दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये एनुअल रिपोर्ट जो आपकी चाहे हो, उसमें कभी ये जिक्र ना किया जाए कि किस बच्चे को कहाँ से स्कॉलरशिप मिल रहा है, कौन उसको खाने का इंतज़ाम कर रहा है, कौन उसके रहने का इंतज़ाम कर रहा है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट का सर सैयद ने बहुत ख्याल रखा और उसके लिए जगह जगह उन्होंने कोशिश की। ये तो एक बात लड़कों के सिलसिले में, और दूसरी बात जो सर सैयद की ज़िंदगी की है, 1892 में वो हम सबको उसकी पासदारी करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, चाहे वो आप बड़े से बड़े ओहदे पे हों, चाहे वाइस चांसलर हों, चाहे कोई भी आप रजिस्ट्रार हों या हम लोग हों या स्टूडेंट हों, सबको जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं, उसकी पाबंदी करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सबूत सर सैयद की ज़िंदगी का एक वाक़या है जो बता के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। 1892 में अलीगढ़ में ड्यूटी सोसाइटी एमओ कॉलेज में बनी। ड्यूटी सोसाइटी इसलिए बनी थी कि बच्चों की तालीम का, जो यहाँ के नादार तलबा हैं, उनकी बहबूद का नज़्म किया जाए। उसके जो भी मेंबर बनता था उसको हलफ दिलाया जाता था कि वो अपनी आमदनी का 1% वो ड्यूटी सोसाइटी को दे, और या तो अभी दे या जब सर्विस में आएगा तब दे, तब वो देगा 1% आमदनी का हिस्सा। सर सैयद चूँकि अलीगढ़ में नहीं पढ़े थे, तो उन्होंने यहाँ के प्रिंसिपल थे, एमओ कॉलेज के होस्ट, उसको एक ख़त लिखा उन्होंने, और ये लिखा कि देखिए मेरी साल भर की फ़ीस है और मुझे अदना क्लास में, पहले क्लास में दाखिला दिया जाए
ताकि मैं इस ड्यूटी सोसाइटी का मेंबर बनूं और मुझे हाज़िरी से मुझे माफ़ रखा जाए, मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूंगा। तो देखिए इस छोटे दायरे उनका इदारा था, वो जिस सोसाइटी के चाहते मेंबर बनते, लेकिन जो कायदा था कि ड्यूटी सोसाइटी का कोई मेंबर वही बनेगा जो यहाँ का तालिब इल्म होगा, तो सर सैयद तालिब इल्म बने। तो देखने की बात यह है कि सर सैयद ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना है तो आपको कुछ उसूलों की, कुछ ज़ाब्तों की पासदारी करना ज़रूरी है। सर सैयद के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, उनके हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। अभी इत्तेबाक से मैं रात में एक किताब उनकी देख रहा था, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है अलीगढ़ में 1885 में एक इदारा बना था, उसका नाम था लायल लाइब्रेरी, भारतवर्षीय लायल लाइब्रेरी। उसकी कुछ रिपोर्ट है, उसके बारे में सर सैयद ने कुछ लिखा है। फिर आखिर में उसका कुछ जवाब दिया, आखिर में लिखा है कि हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब कायम की मदरसतुल उलूम, तो हमने यहाँ किसी को मना नहीं किया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सर सैयद ने लिखा कि आपको पता है यहाँ थैलोजी डिपार्टमेंट है, जहाँ शिया सुन्नी थैलोजी का तालीम का नज़्म है। सर सैयद ने लिखा कि हमने यहाँ जो संस्कृत के प्रोफेसर थे उनसे कहा कि आप हिंदू थियोलॉजी या वेदों की तालीम का भी इंतज़ाम करें और इसी तरह का डिपार्टमेंट खुले। वो बावजूद नहीं हो पाया, लेकिन सर सैयद ने लिखा कि मैंने 1880 का ख़त है, वो नोट है जो गज़ट में छपा, कि मैंने कहा ये किया जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैंने जो यहाँ के नॉन मुस्लिम तालिब इल्म हैं उनके लिए जगह जगह मैंने रसोई खाने बनवाए हैं, और ताकि वहाँ लोग रह सकें और पीपल के दरख्त लगाएं, ताकि वो चाहें तो उसके ज़ाहिर है आपको पता पीपल का दरख्त की एक मजहबी एक चीज़ है। और वो भी उन्होंने कहा था कि ये पीपल के दरख्त लगेंगे और लगे उनके ज़माने में। तो उन्होंने लिखा कि देखिए दूसरे लोगों की सेंसिबिलिटी का ख्याल रखा। तो हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम दो आँखों की बातें तो करते हैं, वो तो कहने की बात है, लेकिन सर सैयद जब किसी जगह पे थे, जब उन्होंने इदारा कायम किया तो उसका उन्होंने लिहाज रखा। बस मुझे यही अर्ज़ करना था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब, ये नहायत पुरमग़ज़ और आलिमाना खिताब रहा और तलबा व तालबात की इस मजमे के लिए बेहद सबक आमोज़ भी। देवियों और सज्जनों, भारतीय ज्ञान परंपरा के श्लोक का एक स्वर्णिम अंश है, आपकी आज्ञा से उद्धृत करना चाहूँगी। शिष्यात इच्छेद पराजयम, यानी कि हर गुरु की ये इच्छा होती है कि वो अपने शिष्य से पराजित हो। आज हम कुछ ऐसे ही शिष्यों को देश भर से यहाँ पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने सर सैयद पर निबंध लिखे हैं। The All India Sir Syed Essay Writing Competition has been organized since 2008 by the AMU PRO office. This year the topic in English was Bridging Communities, Sir Syed's efforts to promote religious harmony in India. विभिन्न समुदायों को जोड़ना, भारत में धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए सर सैयद के प्रयास, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान यकजहती, सर सैयद की हिंदुस्तान में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने की कोशिश। The PRO office received hundreds of entries and they were very diligently assessed for the 3 prizes in each category. The third prize is for 10,000 rupees, the second prize is for 15,000 rupees, and the first prize is for 25,000 rupees. We have 9 winners, 3 each in all the 3 categories. I request them all to come and line up here, and I will request the honorable dignitaries on the dais, presided over by our Vice Chancellor, Professor Naima Khatun, to kindly hand over the prizes to these students writing essays on Sir Syed and his philosophy in English, Hindi, and Urdu. May I now request all the winners to come and stand here, right in front of the dais, and one by one their names will be called upon in this order: English, Hindi, and Urdu. In the English category, the third prize goes to Ashutosh Kumar, a BTech student from the Sastra deemed to be University, Tanjavur, Tamil Nadu. Ashutosh is not here, so Ms. Madiha Naz will come forward and receive the prize. I request you all to line up here in front of the stage, please, everybody, so that we are quick and we don't waste time in coming and going. The second prize in the English category goes to Sahiba Meher, a BLLB student from the Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala.
Sahiba Meher, may kindly come up. Sahiba Meher. Sahiba Meher. Please. I will now request AMU Vice Chancellor, Professor Naima Khatoon, joined by our Chief Guest and Guests of Honor, to give away the prize of 15,000 rupees to Sahiba Meher. And the first prize in the English category goes to Mehwish Khan, an MP.Ed student of the Aligarh Muslim University, 25,000 rupees. In the Hindi category, the third prize is won by a PhD research scholar of the Aligarh Muslim University, Shaista Sana. Shaista Sana. The second prize to Samia Akram. Can Samia Akram please come upon the stage? ₹15,000 cash prize. And the first prize in the Hindi category goes to Miss Firdaus, again a PhD research scholar of the Aligarh Muslim University. Moving on to the category of Urdu essay competition, the third prize is won by an MA student of Aligarh Muslim University, Musaifur Rahman. Musaifur Rahman. ₹10,000 cash prize to Musaifur Rahman, and the second prize goes to Shahid Jamal, a PhD research scholar from the Jamia Millia Islamia. Shahid Jamal, heartfelt congratulations. ₹15,000 in the Urdu category, the essay coming from the Jamia Millia Islamia University. And in the Urdu category, the first prize for ₹25,000 goes to Nighat, a PhD research scholar from the Aligarh Muslim University. Thank you very much, dignitaries on the dais, for doing the honors, and many congratulations to all the winners. ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ने से पहले हम अपने माया-ए-नाज़ ओल्ड बॉय जिन्होंने यहाँ से इंजीनियरिंग किया था, लिंक लॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब ज़फ़र आलम साहब का इस्तकबाल करना चाहेंगे। हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी ने सर सैयद को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा, और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने सर सैयद को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। और क्यों ना कहा जाए, 1877 में जब एमओ कॉलेज का संग बुनियाद रखा जा रहा था स्ट्रेची हॉल में, तो डाइस के ऊपर बनारस नरेश शंभू नारायण थे, लॉर्ड लिटन थे और सर सैयद थे। ये सर सैयद का विज़न था। आज हम जब वापस आते हैं और देखते हैं, आज फिर उस स्टेज को देखते हैं, तो नईमा खातून वाइस चांसलर हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव हैं और जया वर्मा सिन्हा हैं। चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। सर सैयद इस ख्वाब को सजाते थे। सर सैयद ने, जैसे शाफिक दवाई साहब ने कहा, सिर्फ नारे नहीं लगाए, करके दिखाया। इस यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद थे। इस यूनिवर्सिटी का पहला पोस्ट ग्रेजुएट भी कोई मुसलमान नहीं, अम्बा प्रसाद थे। एमओ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कोई मुसलमान नहीं बल्कि सिडन थे, जो अपने ज़माने के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे। तालीम के मैदान में मज़हब नहीं देखा जाता। सर सैयद का ये विज़न आज अगर हिंदुस्तान कबूल कर ले, आज हम ये इस बात को समझ लें कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ टैलेंट है और हमें टैलेंट की कदर करनी चाहिए, तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे एक माए-नाज़ सपूत जिन्होंने यहाँ से MBA किया, जनाब अजय चौधरी साहब 1996 बैच IAS ऑफिसर हैं, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस हैं। इससे पहले आप जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं दिल्ली रेंज में। अरुणाचल प्रदेश में आपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नौजवानों को मिलिटेंसी के खौफ से इस तरह से बचाया, इस तरह से आपने उस चीज़ को हैंडल किया कि वहाँ के जो NSCN मिलिटेंट्स थे, उनसे उन नौजवानों को महफूज किया। इसी तरह जब आप डिप्टी कमिश्नर
पुलिस ईस्ट दिल्ली रहे, तो आपने पूरे इलाके के अंदर अमन कमेटी कायम की और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक को साथ साथ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पब्लिक खुल के एक बात कह सके। इसी तरह जब आप डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट दिल्ली रहे तो आपने जामिया नगर के पुलिस स्टेशन के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी बनाई और काउंसलिंग सेंटर बनाया। जब पुलिस अदब, और फिर ये भी कि अजय चौधरी एक मुसन्निफ भी हैं, अंग्रेज़ी किताबों का आपने उर्दू में, आपने हिंदी में तर्जुमा भी किया है। जब पुलिस के लोग अदब से जुड़ जाते हैं, साहित्य से जुड़ जाते हैं, तो उनके अंदर की सख्ती अपने आप लचक और नरमी में बन जाती है। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जनाब अजय चौधरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जनाब अजय चौधरी, IPS गेस्ट ऑफ ऑनर। Respected Vice Chancellor AMU, Professor Naima Khatun Sahiba, Chief Guest of this day, Janab Muzaffar Ali Sahab, Former Secretary General Lok Sabha, Snehlata Srivastava Ma'am, Former Chairperson Railway Board of India, Jaya Verma Ma'am, उसके अलावा डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन साहब, एक्स वाइस चांसलर AMU प्रोफेसर गुलरेज साहब, AMU के रजिस्ट्रार नौजवान IPS मोहम्मद इमरान साहब, डॉक्टर शाफे किदवई साहब, मेरे साथी राव हशमत अली ख़ान, प्रोफेसर सफ़ावी मैम, प्रोफेसर विभा मैम और तमाम साथी, खुसरो भाई भी शायद बैठे हैं, एस्टीम्ड फैकल्टी, डियर स्टूडेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले AMU का शुक्रिया, वाइस चांसलर मैडम का शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गुलिस्तान सैयद के एक छोटे से इंसान को इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आज आप लोगों से मिलूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और जो तमाम बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मैं भी आप लोगों के बीच में जब बैठा करता तो शायद ये सपना सर सैयद की आंखों से मैंने भी देखा होगा कि सुलेमान हॉल के आगा खान हाउस के 36 नंबर कमरे में रहने वाला ये इंसान कभी शायद उसको ये शर्फ हासिल होगा कि वो आप लोगों के बीच में आकर बात करेगा। तो सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिले नज़र उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। साथियों, जिस शहर में आपका बचपन बीता हो, उस शहर में बहुत लंबे अरसे के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। वो तमाम चीज़ें, वो अलीगढ़ का पहला दिन जब मैंने अपने वालिद स्वर्गीय डॉक्टर राम सिंह जी के साथ रिक्शे में बैठकर बस अड्डे से हॉस्टल की तलाश में, पहले मुझे आफ्ताब हॉस्टल मिला था, लेकिन फिर बातचीत करके कुछ कोशिश करके मैं सुलेमान में आ गया। तो उस दिन से लेकर आज तक का जो तवील सफ़र है, 40 साल से ऊपर की ये ज़िंदगी निकल गई, इतनी यादें हैं कि आदमी बहुत बहुत भावुक हो जाता है, जाने क्या क्या बोलना चाहता है, और ये डरता भी जाता है कि कहीं कुछ ऐसी गलत बात ना निकल जाए, क्योंकि अलीगढ़ में बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आज मैंने देखा कि या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरा कर रखा जा रहा है, या आप लोग बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। तो दो लोगों का शुक्रिया मुझे अदा करने की इजाज़त दीजिए, मेरे मरहूम वालिद डॉक्टर राम सिंह और मेरे बड़े भाई मेजर संजय यादव। इन लोगों की बदौलत मैं आज आपके बीच खड़ा हूँ। तो ये अलीगढ़ चीज़ क्या है, ये अली क्या है, अलीगेरियन क्या है, और अलीगेरियनिज़्म क्या है, इसको कैसे हम बयान करें। मैं ये कहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ कोई ईंट और गारे की इमारत नहीं है।
इस इदारे की तुलना, इस इंस्टीट्यूशन की का कंपैरिजन हम दुनिया के किसी और इदारे से नहीं कर सकते। इसके ज़र्रे ज़र्रे में, इसके एक एक ईंट में, इसके गारे की हर परत में जज्बात हैं, एहसास है, एक तारीख़ है। ये एक ऐसे इंसान के विज़न की तामीर है, एक ऐसा इंसान जिसे हम सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जानते हैं। और अलीगढ़ में आकर सर सैयद अहमद ख़ान की शान में कुछ कहना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। शाफ़े अहमद किदवई साहब ने और तमाम लोगों ने सारी बातें बताई। मैं सिर्फ वो एक, मेरे हिसाब से वो युग पुरुष थे, युग पुरुष जो युग को बदलता है, युग दृष्टा थे और युग प्रवर्तक थे। ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी ऑफ हिज टाइम्स। कौन, आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, कोई लेफ़्ट की, राइट की, किसी की, उनसे बड़ा रिवोल्यूशनरी अपने ज़माने में कोई हो नहीं सकता। और ये तमाम बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, जानते भी हैं। और उसी आदमी को दुनिया ने पहचाना है, माना है, जिसने अपने युग में चलती हुई सड़ी गली मान्यताओं को, रस्मों को, रिवाजों को चैलेंज किया है। चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हों, या हिंदुस्तान का गांधी हो, या सर सैयद अहमद ख़ान हो। अपने ज़माने की कुरीतियों को दूर करना, समाज को बदलना और धारा के ख़िलाफ़ चलना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यही हमें अलीगढ़ से सीखना है, यही हमें अलीगढ़ सिखाता है। मैं ये कहूँगा कि शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमायाँ होगा। ये सर सैयद का नूर है कि एटा ज़िले के एक छोटे से कस्बे का, गांव का रहने वाला लड़का, ये अजय चौधरी जिसका नाम है, आज आपके सामने खड़ा है। और जब वो अलीगढ़ में आ रहा था, हॉस्टल में घुस रहा था, तो उसके दिल में कितनी बातें थीं। लेकिन एक और शख्स का नाम लूँगा। इन आदमी की ज़िंदगी में माँ का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मन में ये बात थी कि वहाँ हॉस्टल में बड़ी परेशान करते हैं लोग, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मेरी माँ ने यह कहा कि अगर तुम अच्छे हो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे अलीगढ़ में एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक मिनट क्या, एक पल क्या, मैं 10 साल हॉस्टल में रहा, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। चाहे हिंदुस्तान में कुछ भी हालात रहे हों, कहीं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अलीगढ़ मेरा घर था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दंगे वगैरह चल रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से आदेश जारी हुआ, फरमान हुआ कि बच्चे अपने कमरे खाली करके घर चले जाएं। मेरे भी दोस्तों ने कहा कि अजय भाई सब लोग जा रहे हैं, आप भी चले जाइए। मैंने कहा भाई अगर मैं इस बार चला गया तो फिर मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। अगर तुम ही लोग मुझे जाने के लिए बोल दोगे तो फिर मेरे दोबारा आने का कोई मतलब नहीं है। और मैं, बहुत से लोग यहाँ गवाह बैठे होंगे, मैं एक दिन के लिए भी पूरे शहर में, देश में कहीं कुछ भी होता रहा, मैं 1 घंटे के लिए भी अपने घर नहीं गया। दंगे ख़त्म होने के बाद घर जाऊँगा, तब तक अलीगढ़ में रहूँगा। 1857 की बात हुई, एक ही तो लड़ाई हम लोगों ने मिलकर लड़ी, और उस लड़ाई में ये कहना कोई मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि मुसलमानों को ही बहुत परेशानी हो रही थी, मुसलमानों से बदला लिया जा रहा था। अंग्रेज़ किसी और दूसरे को भी कोई अलकाब नहीं दे रहे थे, कोई नवाज नहीं रहे थे। उनकी सब चालें थी, वो जान रहे थे हमें किसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह इस आज़ादी की जो हवा उठ रही है इसको कैसे कमज़ोर करना है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पूरा हिंदुस्तान जाग गया था और उसने अपनी लड़ाई को लड़ा, और हमने 1947 में आज़ादी हासिल की। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान को हम लोग कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, कि हम लोग कभी कभी उनके इतने भारी भरकम बड़े व्यक्तित्व को, मेरे हिसाब से वो, मैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर इंसान को इवेल्युएट किया जाता तो उनको अवतार कहा जाएगा। जो काम सर सैयद ने किया है वो अवतार का काम किया है। वीमेंस एजुकेशन की बात आई, एक एनेक्डोट, मैंने सर सैयद की बायोग्राफी पढ़ी है। जब यहाँ से वो इंग्लैंड में पहुँचे तो जिस घर में रहते थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि मेड सर्वेंट थी, वो अपने फ्री टाइम में जब खाली हो जाती थी तो इंग्लिश और फ्रेंच के क्लासिक्स पढ़ा करती थी।
ड्राइवर से जब वो टैक्सी में बैठते थे तो ड्राइवर हिस्ट्री और लिटरेचर की बातें किया करते थे। उन्होंने ये बात लिख कर भेजी कि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर महिला, हिंदुस्तान का हर इंसान एजुकेटेड हो और उसकी एजुकेशन का स्तर इस लेवल तक पहुँचे। ये आज सर सैयद का ही सपना है कि आज वाइस चांसलर साहिबा और इस स्टेज पर तीन ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी दुनिया में इन्होंने पहला एक अचीवमेंट हासिल किया है, फर्स्ट वाइस चांसलर, फर्स्ट रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन और फर्स्ट सेक्रेटरी लोकसभा जनरल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरी दुनिया कैसे बदल रही है आज उसकी निशानी है। इसके अलावा जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में देखा, सारी लड़कियां ही मेहनत कर रही हैं, आगे निकल रही हैं, बहुत खुशी की बात है। और ये सर सैयद का सपना है। शायद उन्होंने अपने वक्त में गर्ल्स कॉलेज शायद इसलिए एस्टेब्लिश नहीं किया होगा कि जिस तरह का रेजिस्टेंस था, जिस तरह का विरोध था, जिस तरह का माहौल था, वो शायद तो फिर जब लड़कों की पढ़ाई के लिए उनको जान से मारने का फतवा दे दिया गया, अगर वो लड़कियों की पढ़ाई की बात कर देते तो क्या होता, हम सब लोग सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। तो हमारी जो तीनों सदारत कर रही हैं मैडम और दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर वाइस चांसलर साहिबा की क़यादत में दिन दूनी रात चौगनी अलीगढ़ कर रहा है। एंड देयर इज़ नो माइलस्टोन विच शी विल नॉट अचीव ड्यूरिंग हर टेन्योर। मैं एक ही शेर कहूँगा कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो बात अलीगढ़ की मैं कर रहा था कि मैंने अलीगढ़ से क्या सीखा। 15 साल की उम्र में यहाँ आया था मैं, 1981 का जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा। तो दोस्तों, मैंने अलीगढ़ से शऊर सीखा, शायरी सीखी, उर्दू सीखी, गालिब को जाना, मीर को समझा, मुंशी प्रेमचंद से यहीं मुलाकात हुई, रघुपति साय फिराक, राही मासूम रज़ा, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, ये सभी यहीं तो मिले, इसी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में। जाने का वक्त अगर हम निकाल पाएँ तो यहाँ मीर भी है, गालिब भी है, तुलसी भी है, सूरदास भी है, सब कुछ रखा हुआ है। सारे फ़ारसी में गीता ट्रांसलेट करके रखी हुई है। क्या ज़माना था और क्या लोग थे और क्या उनकी सोच थी, कमाल के लोग थे। आप यहाँ से निकलिए, लाइब्रेरी से थोड़ा सा सामने आ जाइए तो आपको आर्ट्स फैकल्टी दिखाई पड़ती है। तो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब साइकिल से खरामा चले आ रहे हैं। उधर आगे बढ़िए तो निज़ामी साहब, प्रोफेसर के निज़ामी साहब क्लास ले रहे हैं। हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाइए तो प्रोफेसर के.पी. सिंह, उर्दू में चले जाइए तो शहरयार साहब, प्रोफेसर जायदा जैदी। वहाँ से निकलिए सुलेमान हॉल की तरफ लौटिए तो पता चला कि ज़फ़र इकबाल अपनी हॉकी से हॉकी खेल रहे हैं। एयर इंडिया की टीम में कम से कम 7 प्लेयर अलीगढ़ के हुआ करते थे। एयर इंडिया की टीम हॉकी की हिंदुस्तान की सबसे अच्छी टीम मानी जाती थी। तो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा जो मैंने वो दौर देखा है। वो यादें बहुत अनमोल है मेरे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और चीज़, आजकल जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ज़फ़र भाई का भी नाम लिया, बहुत बातें चल रही हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है, येल में पढ़ाई जा रही है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, हो सकता है हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी आ गई हो। मैं प्रोफेसर नजमुल हसन साहब और जावेद अख्तर साहब का नाम लेना भूल गया। तो इमोशनल, हमारी जो मैं कह रहा था कि अलीगढ़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमें हार्वर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस समझनी है तो अलीगढ़ में थोड़ी देर रह लीजिए, किसी क्लास में एडमिशन ले लीजिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूर आ जाएगी, और कुछ आए या ना आए। वो कैसे आ जाएगी कि अगर आपको नोबेल प्राइज़ भी दिया जा रहा हो ना, तो हमारे भाई लोग ऐसे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वहाँ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, अलीगढ़ में बहुत लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बिना प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा, आपके लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हम इसको कहते थे हॉस्टल में चढ़ा दिया। तो अब चढ़ाने के जैसे कि अब पता नहीं कितने बहुत बरस हो गए हैं, आप बैठे हुए हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं चाय के ढाबे पर, और एक शख्स कोई आ रहा है मिलने वाला, तब धीरे धीरे कहें ये केस कहाँ से आ गया, बहुत बिगड़ा हुआ केस है। और जैसे ही आए, अरे भाई इतने दिन हो गए मुलाकात नहीं, कहाँ थे आप, बिठा लिया और पूरा चाय का वज़न भी उन्हीं के ऊपर डाल दिया। तो ये अलीगढ़ है। और 2 और लोगों के नाम लूँगा, बहुत ज़रूरी है, मैं अपने शायद प्रोफेसर्स को भूल जाऊँ और तमाम लोग दोस्तों को भूल जाऊँ,
हमारे हॉस्टल में मैम, यहाँ पर हर हॉस्टल में 10 कमरे के ऊपर जया मैम और स्नेहलता मैम हॉस्टल में हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए बियरर होते हैं। जैसे आपका नाश्ता लाना है, आपका लंच को रिमाइंड कराना है, आपको डाइनिंग हॉल से कभी आप खाने नहीं जाना चाहते तो खाना लेकर आया जाए। और अभी शाफे भाई ने कहा कि वेजिटेरियन किचन भी हमारे यहाँ लगभग हर हॉस्टल में है। तो हमारे आगा खान हाउस में एक होते थे मुख्तार मियाँ और एक नौजवान था, अब तो वो भी मेरी उम्र के हो गए, यूनुस। इतने भले लोग। थोड़ा सा उस ज़माने में थोड़ा दादागिरी का भी माहौल रहता था। आप कितने साल हो गए हैं, सीनियर नहीं, आप खैयड़ सीनियर हैं, तो पहले आपका काम किया जाएगा, पहले छोटे मोटे जूनियर का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन इन दो लोगों ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया और इतनी मेरी मदद की कि मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। और ख़ास तौर से मुख्तार मियाँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि अलीगढ़ क्या चीज़ है और अलीगढ़ियनिज्म क्या चीज़ है। एक बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं थोड़ा परेशान रहूँगा, कुछ कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि अजय साहब, ये मुख्तार मियाँ मेरे हॉस्टल के बियरर, उनका नाम मैं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अजय साहब, आप पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी तैयारी करिए और मेरी बेगम पूरी रात एक पैर पर खड़े होकर आपके लिए इबादत करेंगी और इंशाल्लाह आपका ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये है अलीगढ़, ये अलीगढ़ की एक परिभाषा है। और एक और छोटी सी कहानी, हॉस्टल की कहानी है कि एक हमारे दोस्त थे, वो किसी वजह से फ़ेल हो गए और शायद बीएससी सेकेंड ईयर में ही फ़ेल हो गए। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, उस ज़माने में बड़ी बात नहीं थी, अब शायद बड़ी बात होगी, बहुत आम था। और मुझे मिला ये एक बीए ऑनर्स में मेडल, राजा जयकिशन दास मेडल। तो उन्होंने कहा कि यार अजय, मुझे थोड़े दिन के लिए अपना, क्या आप ये मेडल दे सकते हैं? मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैंने बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई, तो मुझे थोड़े दिन के लिए अपना मेडल दे सकते हो? मेरी समझ में नहीं आया। ले जाओ भाई, क्या ज़रूरत है, ले जाओ, मैं रखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त को मिला है। तो मेडल लेके चले गए। उसके बाद फिर एक दिन बोले कि आओ चलो घूम के आते हैं, अपरकोट पे मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मुलाकात कराता हूँ। ठीक है चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। तो रिश्तेदारों में भी आप समझ सकते हैं उनको किनसे मिलना होगा। तो वहाँ गए तो बड़ी उनको मुबारकबाद मिल रही है, बधाइयाँ मिल रही हैं। अरे खलीक भाई, अरे नाम निकल गया मुँह से, कोई बात नहीं। तो सोचा था नाम नहीं लूँगा, लेकिन निकल गया। अरे आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपको बीएससी में मेडल मिला है और ये देखिए मेडल ऐसा होता है वैसा होता है। अब अजय चौधरी वहाँ चुपचाप बैठे हुए मेडल देख रहे हैं। पूछ रहा है अजय भाई, आपको कुछ नहीं मिला? मैंने, मुझे कुछ नहीं मिला, ये सबसे योग्य थे, इन्हीं को मिला है। तो उन्होंने क्या किया था कि मेरे मेडल पे प्लास्टिक की पन्नी को पिघला के मेरा नाम छिपा दिया था। तो ये अलीगढ़ की मोहब्बत है, ये दोस्ती की मिसाल है। यहाँ दोस्ती की मिसालें मिलेंगी आपको और बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। ये अलीगढ़ है, मेरे हिसाब से तो अलीगढ़ की ये डेफिनेशन है। मुझे पता नहीं कितना वक्त मैडम ने दिया है। और तो आखिर में बस इतना कहूँगा कि जैसे एक शायर हुए हैं, कवि हुए हैं हिंदी के बहुत बड़े, सैयद इब्राहिम ख़ान। तो सैयद इब्राहिम ख़ान को कहते हैं रस खान के नाम से लोग जानते हैं, और वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने अपनी कुछ ख्वाहिशें अपनी कविता में लिखी। उन्होंने कहा कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं गोकुल में जन्म लूँगा और गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूँ। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ लगे हैं उनके ऊपर घूमता रहूँ। और एक बात उन्होंने ये कही कि इस श्री कृष्ण की इस काली कमली के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज निछावर कर सकता हूँ। ये कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी। तो मैं भी उसी अपनी अलीगढ़ की भक्ति की श्रेणी में ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में भी यहीं एडमिशन लूँ, यहीं का तलबा बनूँ और कश्मीर हाउस के एक कमरे के लिए, सूफ़ी जी के पराठे के लिए, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की एक कुर्सी के लिए और आर्ट फैकल्टी के लिए तीनों लोगों का राज निछावर करना चाहता हूँ। साथियों, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बहुत बड़ा दिन है। ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, माजी का नक्श दिल से मिटाया न जाएगा।
दौरे ख़िज़ा में भी तेरी कलियां खिली रहें, ताहश्र ये हसीन फ़िज़ाएँ वसी रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलीगढ़। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। अलीगढ़ पाइंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दिल को छूने वाला खिताब, यादगार खिताब, एक अलीग के दिल से निकली हुई आवाज़ एक अलीग के लिए। दिस इज़ द अलीगढ़ टर्मिनोलॉजी, द लेक्सिकन दैट वी ऑल शेयर। पार्टनर, केस, खैर, और ये एक अलीग ही एक अलीग से बोल सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब अजय साहब। आपको इस वक्त आईपीएस कहने का जी नहीं चाह रहा है, आपको इस वक्त राइटर कहने का जी नहीं चाह रहा है, आपको इस वक्त सिर्फ एक प्राउड अलीग कहने का जी चाह रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो इस खिताब के लिए। तालियों ने सब कुछ कह दिया है। हमारी दुआ है कि आइंदा कभी आप पे कोई ऐसी मुसीबत ना पड़े जिसमें दुआ की ज़रूरत हो, लेकिन अगर पड़ती है तो आपके दोस्त की अहलिया जो पूरी रात आपके लिए दुआ में खड़ी रहीं, वैसे ही हम सब आपके लिए दुआ में खड़े रहेंगे। और जिस मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में आपका तारुफ हुआ मीर से, गालिब से, उसी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की इंशाल्लाह ज़ीनत बने आपकी किताबें, आपके नॉवेल्स और आपके ट्रांसलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो। Ladies and gentlemen, we move on to our next speaker. We have been mentioning time and again Madam Jaya Verma Sinha, a retired IRTS officer, is here with us as the first woman chairperson of the Railway Board in its 112-year history. With over 36 years of service as an IRTS IRMS officer, she has handled complex assignments in India under the Ministry of Railways and abroad in diplomatic roles under the Ministry of External Affairs. As the first female chairperson and CEO, Central Railway Board, and ex-officio Principal Secretary to the Government of India, she led Indian Railways and served as the first railway advisor to the Indian High Commission in Dhaka, Bangladesh. She also contributed significantly to strengthening the diplomatic relations by initiating the Maitri Express between Kolkata and Dhaka and the rail link between Akhora, Bangladesh and Agartala. We are deeply, deeply honored by the presence of Madam Jaya Verma Sinha as one of our guests of honor. I request you, Madam, for your address. Professor Naima, Janab Muzaffar Ali Saab, Ma'am Snehlata, Shri Ajay Chaudhary, all the esteemed guests, faculty, students, friends. Namaskar and a very warm good morning to all of you. Good afternoon now. It is indeed a very big honor and a privilege to be here before such a distinguished audience on this remarkable occasion to celebrate Sir Syed Day. I sincerely thank Professor Naima, the first woman Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University, for inviting me to participate in this event. It is particularly inspiring to be here at AMU and to feel this vibrant atmosphere and to hear these wonderful speeches and anecdotes, and especially to hear Mr. Ajay Chaudhary recount his days here, which bring out so vividly what Aligarh Muslim University stands for. We are indeed privileged to thank Sir Syed for creating this institute, which is living his legacy. Being here, it reminds us how Sir Syed's foresight and determination laid the foundation for a modern and educated society. His establishment of the Muhammadan Anglo-Oriental College in 1875, which eventually became this Aligarh Muslim University, was a courageous and forward-thinking endeavor at that time, which has been again and again brought out by the various speakers also as to how he faced various fatwas, etc. But he remained steadfast in his vision to make this country have citizens who are modern thinking, forward-looking, educated, and progressive. His vision, where modern education rooted in scientific knowledge would enable the people of India
to compete in a rapidly changing world. This belief remains very, very relevant even today, and India, as it stands at the cusp of a transformative stage now and is leaping forward into its global endeavors. This is the kind of India and the citizens which can lend wings to this endeavor. Today we are celebrating Sir Syed's contribution to education and are reflecting on his ideals and hoping that they can continue to guide us in facing the challenges of our contemporary world. Institutions like AMU, which have thoroughly preserved and propagated Sir Syed's vision, have a crucial role in preparing young minds for the future. And as we have heard about the various accolades won by the alumni, prestigious positions held by the alumni, and including the two here on the dais, it is indeed a very, very fortunate situation that we have an institution like Aligarh Muslim University, which is taking forward the youth of the country in this direction. Sir Syed was committed to social reform, promoting the importance of social justice and women's education and the eradication of illiteracy. He saw education as a means to address social inequalities and foster a sense of community, which has again been showcased by all the various instances related here. As I look at the students at this grand event, I'm filled with hope and a lot of admiration. You are the future leaders and change makers and the torchbearers of Sir Syed's legacy. Your education at AMU will shape your success and empower you to be an agent of change in society. I encourage you to embrace this responsibility with humility and courage. Remember that true success lies not only in your professional achievements, but in your contribution to the betterment of society and the upliftment of those around you. AMU's distinguished alumni are a testament to the institution's impact on our nation. Many of them who have been mentioned and also those who have not been mentioned have gone on to serve in prominent roles across various fields, from public service to the arts, sciences, and business. The chief guest of today embodies this rich legacy of his alma mater. This university has consistently been a cradle for intellectual growth, and I am confident that this will continue to play this vital role in shaping the leaders of tomorrow. The students of AMU, with their diversity of thought, culture, experience, represent the future of India, a Viksit Bharat. I must express my admiration for Professor Naima and her leadership. As the first woman Vice-Chancellor of AMU, she is breaking new ground. Under her guidance, AMU continues to grow as a center of learning, innovation, and inclusivity. Madam Vice-Chancellor, your leadership inspires countless women nationwide, and I'm confident that you will continue to steer this prestigious university to new heights. Looking to the future, we must remind ourselves that Sir Syed's vision was not limited to the intellectual or academic only. He believed in building a society based on harmony, compassion, and mutual respect. I'm happy that AMU has always been where these values are cultivated. Before I conclude, I would like to add a personal note. My mother, she did her B.Ed from this very university. And that was 1959, when women were hardly getting any higher education. And she was also the first postgraduate woman in her family. I'm very, very proud of her. So a big heartfelt thanks to this institution, which has shaped my upbringing and imparted its forward-looking, progressive, and inclusive ideals. This university has been contributing in shaping our nation's future. In the 21st century, India is poised to be a global leader, and education remains at the heart of this journey to becoming a Viksit Bharat.
institutions like AMU preserve our cultural and intellectual heritage and lead us towards innovation and progress in a world driven by technology and change. I was very happy to hear about the alumni of this prestigious university heading ISRO, NASA, and all kinds of technical institutions and world over, including the honorable professor here who spoke about medicine and the challenges of health. Remembering Sir Syed's words as we move ahead, success comes to those who work hard and remain steadfast in their pursuit of knowledge. This timeless message should guide all of us as we work to build a more just, equitable, and progressive society. Thank you again for inviting me to this beautiful ceremony. May Sir Syed's vision continue to inspire us. Thank you and Jai Hind. मैडम, हमें जान के भी बहुत खुशी हुई कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने यहाँ से बीएड किया। बहुत मुबारक हो हमारी तमाम बच्चियों को भी। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने 1920 में अपना पहला चांसलर एक ख़ातून को, बेगम सुल्तान जहाँ को मुंतखब करके सारी दुनिया को विमेन एम्पावरमेंट का पाठ पढ़ाया था। हमारे लिए आज फिर खुशनसीबी की बात है कि मैडम स्नेहलता श्रीवास्तव, रिटायर्ड IAS 1982 बैच मध्य प्रदेश कैडर, आज हमारी मेहमान एजाज़ी हैं। अपने 35 साल के तवील कैरियर में आपने मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में SDM, एडिशनल कलेक्टर और DM की जिम्मेदारियां निभाई। इसके साथ ही आपने इंडियन इनकम टैक्स सर्विस के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर विजिलेंस डिपार्टमेंट, इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट रिड्रेसल के मैदान में बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहीं रेलवेज़ में, और फिर हिंदुस्तान के इतिहास में एक तारीख रकम की जब 2017 में आपको पहली लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल, खातून सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। और ये भी खुशनसीबी है कि उन्होंने हाउस और सेक्रेटेरिएट को मैनेज करने में नुमाया खिदमत अंजाम दी, और हाउस के अंदर डिजिटलाइजेशन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव्स उनका हमेशा फोकस रहा है। आपने बहुत से ममालिक का सरकारी दौरा किया और डिप्लोमेटिक इश्यूज़ के अंदर भी महारत हासिल की। हम सब के लिए खुशनसीबी की बात है कि ऐसी तारीख़ साज ख़वातीन हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव साहिबा से कि तशरीफ़ लाएं, और तमाम बच्चियों की जानिब से उनके लिए एक शेर पेश करना चाहता हूँ। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियाँ न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। IAS मोहतरमा स्नेहलता श्रीवास्तव। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट साहब हैं श्री मुज़फ़्फ़र अली जी, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून जी, जो पहली महिला वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं, जया वर्मा सिन्हा जी, मैडम जया वर्मा सिन्हा, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन रही हैं, और हमारे अजय चौधरी जी, जिन्होंने अपने भाषण से हम सबको मुग्ध कर दिया। IPS ऑफिसर हैं, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, और इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट किया उन्होंने कि हम लोगों का दिल छू लिया। तो उसके बाद हम लोगों का भाषण बड़ा रूखा सूखा लगेगा, पर उनको सुन के जो दिली सुकून मिला, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमारे रजिस्ट्रार साहब भी इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफ़िसर हैं और यंग ऑफ़िसर हैं, मिस्टर इमरान खान और मोहम्मद इमरान खान, इफ़ आई से करेक्टली। इसके अलावा हमारे साथ डायस पे जुड़े हुए हैं जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, श्री रफ़ीद्दीन साहब जी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि
इतने कैटेगरी के आपके पास बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं कि हम इस हॉल में और ये इस पंडाल में इतनी एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं और मेंबर्स इंचार्जेस हैं। इसके अलावा डीन ऑफ फैकल्टीज़ हैं, टीचिंग स्टाफ है, कोर्ट मेंबर्स हैं, एल्यूमिनाई हैं, डॉक्टर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, देन फायर फाइटिंग टीम है, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे इस प्रोग्राम के सरताज हैं वो स्टूडेंट्स हैं एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो डायस पे हमारे बैठे हुए डिग्निटरीज़ हैं, हमारे डायस के सामने बैठे हुए डिग्निटरीज़ हैं। तो आई वुड लाइक टू एड्रेस एवरीवन एंड हमको एक ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि यदि आपको यंग रहना है तो रोज़ आप एक यंग पर्सन से ज़रूर बात करिए। अगर आपको यंग रहना है ज़िंदगी में तो रोज़ आप एक ढूंढ करके, यदि आपकी एज हो गई है तो आप अपने उम्र के लोगों के अलावा ऐसे लोगों से, बच्चों से बात करिए जो यंग हो। और एक और चीज़ उन्होंने बताई थी कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएं वैसे वैसे जो पुरानी कोई ऐसी व्यवस्था है जो अब इररिलेवेंट हो गई है तो उसको हटाते जाएं। अगर इररिलेवेंट हो गई है तो जब भी आप कोई नया व्यवस्था जारी करें तो एक पुरानी व्यवस्था को ढूंढ करके जो आपको लगता है कि अब कोई मायने नहीं रखती है उसको हटा दें। तो जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट्स करने वाले हैं उनको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो जब भी हमारे शासन में हम लोग कोई नया आदेश निकालते थे जिसमें कहते थे ऐसे करो, ऐसा प्रोफॉर्मा भर के जानकारी दो, तो एक पुराना ढूंढ लेते थे कि जो अब इररिलेवेंट हो गया है। तो वैसे ही अलीगढ़ मतलब इस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उसको देख के लगता है कि इसको मैनेज करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाएं जो हमारे इसको और आगे बढ़ाएं, हमको हमारी यूनिवर्सिटी को मॉडर्नाइज़ करें। आज के ज़माने के हिसाब से हम इंटरनेट, कंप्यूटर और सोशल मीडिया इस पे एक्टिव हों और हमारे बच्चे समय के साथ आगे बढ़ें और जहाँ भी जाएं वो तो वैसे भी इतने अच्छे अच्छे नाम हम लोगों के सामने हैं कि राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फिल्मकार हैं, गीतकार हैं और पद्म भूषण लेने वाले बहुत बहुत बड़े बड़े महानुभाव हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मैं यूपी से आती हूँ, मतलब आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, बट मेरा एजुकेशन मध्य प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश काडर भगवान की कृपा से मुझे वहीं मिला है, तो मैं अपने स्टेट को सर्व कर सकी हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको सर सैयद जी की जो हम फाउंडेशन डे आज मना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जब मैं उनका पूरा जो राइटअप है उसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या विज़न थी उन महानुभाव की, क्या विज़न थी कि उस ज़माने में जब लोगों को ये पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, उन्होंने इतने आगे की सोच करके इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, महिलाओं के एजुकेशन के लिए इतना आगे तक काम किया। हेड्स ऑफ टू हिम एंड आई रियली मेरा सर
विनम्रता से और सादर से झुकता है उनके लिए कि उन्होंने अपने देश के लिए इस यूनिवर्सिटी को इतना अच्छा स्वरूप दिया और इस स्वरूप में वो देखा जो इतने सालों 100 साल के बाद भी जो रिलेवेंट है और जिसके माध्यम से हम सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो महिलाओं की एजुकेशन। मेरे हिसाब से जो महिलाओं गर्ल्स का परसेंटेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, गर्ल्स स्टूडेंट्स का, वो मुझे जो अंदाज़ा बताया गया है वो 35% है। तो यदि इस परसेंटेज को और हम आगे बढ़ा सकें और उसमें लड़कियों का, गर्ल्स का जो योगदान है वो बहुत ज़रूरी है। वो अपने आसपास के जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यहाँ तक पहुँचाने में मदद करें। हमारा जो समाज है वो भी इसको मदद करे तो हम देश में बहुत आगे तक बढ़ेंगे। और मैं इस फोरम के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा हम लोग अभी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम हमारी जो वाइस चांसलर हैं वो पहली प्रोफेसर नईमा खातून जी वो पहली वाइस चांसलर बनी हैं, तो हमको ये सेलिब्रेशन का मौका और भी क्षेत्रों में मिले और उसके लिए जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं को, लड़कियों को का नाम ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे वो ज़्यादा काम नहीं करती हैं, उसको करें। जैसे हम लोग जब आ रहे थे तो राइडिंग क्लब के हमारे ग्रुप हम लोगों को लीड कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने उनसे मिले थे, उसमें 2 लड़कियाँ भी थी। मुझे देख के बहुत बहुत खुशी हुई उनको और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि राइडिंग का मैंने भी सीखी है और मैं करती हूँ। हुआ ऐसे कि इंदौर में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी और उसमें इतनी भीड़ होती है कि उसमें कार से आप नहीं जा सकते और रात भर वो अनंत चतुर्दशी का वो होता है, झांकियाँ निकलती हैं, उसको रात भर में उसको सिराने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है। तो वो हमारे कलेक्टर और एसपी जो थे वो मुझे थोड़ा सा चिढ़ाने के तौर पे कह रहे थे कि मतलब मुझे टीज़ करने के लिए कह रहे थे कि कलेक्टर बोले मैं तो घोड़े पे रहूँगा और एसपी बोले मैं भी घोड़े पे रहूँगा। आई वॉज सिटिंग इन द सेम कार, सो आई सेड मैं भी घोड़े पे रहूँगी। सो देन दे वर क्वाइट सरप्राइज एंड दे सेड कि अच्छा। तो पर हुआ ये कि जब रात भर मैंने कभी राइडिंग नहीं करी थी, तो जब रात भर राइडिंग करी और सुबह हम लोग अपने अपने घरों को गए और जो मैं लेटी उसके बाद नहा धो के, जब मैं उठने की कोशिश करूं तो मेरा इतना स्टिफ हो गई थी स्पाइन कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप। आई डिडंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। Then again I called somebody, then they said that you take a hot water bath, and after that I became a little better. But next day again one has to go to the office, and I learned swimming also. I can teach swimming in such a like मेरे परिवार के जितने लोगों को स्विमिंग है वो मैंने सिखाई हुई है, मुझे बड़े अच्छे तरीके पता है स्विमिंग के लिए। तो ऐसे काम जो आप करें, तो जब कभी फ्लड्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में तो जो ऑफिसर्स को स्विमिंग नहीं आती वो थोड़ा घबराते हैं उसमें बोट में जाने में। तो हम कहते थे नहीं हम तो चलेंगे। तो बेसिकली जिस जॉब में हैं उस जॉब के लिए आपको ऐसे काम आना चाहिए जिसमें आप घबराएं नहीं और लीक से हटकर काम करें। तो जो यहाँ पे गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उन सभी से मैं ये मेरी दिली इच्छा है कि आप ऐसे काम करें जो लीक से हटकर हों और जिसमें आप अपना परचम लहरा सकें। और उसके लिए मेहनत करनी होगी और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, ये मेरा मानना है। सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा मंत्र है जो कि हम लोग नहीं करते आजकल। तो सुबह 4 बजे उठिए और उस समय आप जो भी याद करेंगे वो आपको याद रहेगा
और जो भी मेहनत करेंगे, वॉक करिए, स्पोर्ट्स करिए, और दैट टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी. एंड अनदर थिंग, जस्ट वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपने 25 साल तक मेहनत कर ली तो हमारी उम्र तक आते आते आप आराम से आपको सैलरी मिल सकती है, आपको रिम्यूनरेशन मिल सकता है, और आपको क्या कहना चाहिए, फेम और नेम मिल सकता है. तो आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी के इस 1/4 पीरियड में आप कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, और बाकी 75 हम सोचते हैं हम 100 साल तक जिए, तो अगर 75 इयर्स जो आपके हैं वो आपके आराम से, आपके परिवार के लिए आराम से निकलें. तो मुझे इस मौके पर इसी बात को कहना है, और मैं इसी कामना के साथ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिनों दिन प्रगति करे, ऊपर चढ़े और देश में अपना नाम करे. धन्यवाद. बहुत शुक्रिया मैडम स्नेहलता वर्मा श्रीवास्तव मैडम. अगर हमें पहले पता होता तो हम आपको अपने विमेंस कॉलेज के ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल में ज़रूर इनवाइट करते. अलीगढ़ में मेस्टन स्विमिंग पूल तकरीबन 80 साल पुराना है, और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि सर सैयद ने अपने ज़माने में 1878 में क्रिकेट क्लब कायम किया, और अलीगढ़ ने लाला अमरनाथ को पैदा किया, वज़ीर अली, मुश्ताक अली, CS नायडू जो टेस्ट प्लेयर हैं अलीगढ़ के हैं. और ये भी जान के आपको खुशी होगी कि अलीगढ़ ने हॉकी के मैदान में सिर्फ ध्यानचंद को पैदा नहीं किया, ज़फ़र इकबाल पद्मश्री हिंदुस्तानी हॉकी टीम के कप्तान और कोच यहीं के, और 13 ओलंपियन अलीगढ़ ने पैदा किए, इनामुर रहमान, असलम शेर खां, प्रगट सिंह, जोगिंदर पाल सिंह वगैरह वगैरह. हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि राइडिंग क्लब जिसका आपने जिक्र किया, ये 135 साल पुराना है, 20 से ज़्यादा घोड़े हैं, और राइडिंग क्लब ने पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इक्वेस्टर्न चैंपियनशिप में यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की है. अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई. अगर आपसे ये कहा जाए कि एक शख्स फिल्म मेकर भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी, पेंटर भी, पोएट भी, फैशन डिज़ाइनर भी, कल्चरल रिवाइवलिस्ट भी, सोशल एक्टिविस्ट भी, और लखनवी तहजीब में पूरी की पूरी तरह जुड़ा हुआ, तो मेरे ख्याल से ये शख्सियत कोई अलीगेरियन की हो सकती है. आप समझ गए हो मेरी मुराद है सैयद मुजफ़्फ़र अली साहब से, पद्मश्री मुजफ़्फ़र अली साहब. ख़वातीन और हज़रात, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि सूफ़ी संगीत से उनकी ख़ास दिलचस्पी है. गमन, आगमन, ख़िज़ां, उमराव जान से उन्होंने जो अलीगढ़ के परचम को बुलंद किया, पूरी दुनिया ने देखा है. उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी ज़िक्र का बहुत ज़िक्र होता है, और होना चाहिए, बेहतरीन पैराए में लिखी गई है. मुजफ़्फ़र अली ने एक किताब एडिट की है, ए लीफ टर्न येलो. बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ आप तमाम की जानिब से एक शेर पेश करके मुजफ़्फ़र अली को दावत दूंगा. चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं. हमने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं. जनाब मुजफ़्फ़र अली साहब, मेहमान खुसूसी. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार. जनाब वाइस चांसलर साहिबा नईमा खातून, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जया वर्मा सिन्हा जी, अजय चौधरी जी, प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन साहब, मोहम्मद इमरान साहब, शाफ़िक़ इदवाई साहब, हमारे साबिक़ वाइस चांसलर गुलरेज़ साहब, और यहाँ पता नहीं मेरे साथ के तो कुछ लोग शायद कम ही हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये एक मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता है कि मैं इस सरज़मीन पे खड़े होकर सर सैयद को सलाम करूं. मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं शायद उस ज़माने में कहीं भीड़ में टहलता होता या कुछ अपना साइकिल पे इधर से उधर जाता, और इस मतलब शायद इस हल्के में भी दाखिल ना होता. लेकिन जिसे कहते हैं वक्त ने और जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है, उसने मुझे कहाँ से कहाँ लाके मुझे पहुँचा दिया. कहाँ से कहाँ लेके पहुँचा ये दिल, मलाइक जहाँ से रहे हार के.
तो ये दिल जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये दिल की अगर सही तराशी मतलब उसको तराशा जाए तो वो अलीगढ़ ही में मुझे लगता है मुमकिन है। यहाँ देखें हमने बहुत से दिल जुड़ते, दिल टूटते, अजीब तरीके की दिल की धड़कनें जो मुझे यहाँ की शायरी में, यहाँ के नगों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में मिले। और इसी दौरान में एक बहुत बड़ी शख्सियत जो मेरे समझ के बाहर थी, एक साइंटिफिक माइंड, एक रैशनल माइंड, एक प्रोमिनेंट मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एन इस्लामिक माइंड विद कंपैशन फॉर ऑल फेथ्स, जिनके बारे में न देखा हो जिन्होंने प्यार हिंदू और मुसलमान का, वो आकर मुस्लिमों हिंदू यक जान दो बदन देखें। तो ये इस तरीके के मिजाज के लोग जो यहाँ मिले, तो एक पूरी 19th सेंचुरी जो है वो अनफोल्ड होती है। सर सैयद की ज़िंदगी में 19वीं सदी का एक इतना बड़ा आपको जायज़ा मिलता है कि एक शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी कर रहा है, अंग्रेज़ के साथ भी काम कर रहा है, अंग्रेज़ को क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे रहा है, और अपनी कौम मुसलमान को भी एक दिशा दे रहा है। उसको ये दिशा दे रहा है कि कैसे वो दुनिया के बराबर आए, बाकी लोगों के बराबर आए, और अपने और कौम के लोग, अपने और मुल्क के जो हिंदू ईसाई लोग हैं उनको भी एक नज़र से, एक निगाह से देखें। ये एक मल्टी फैसेटेड एक ज़िंदगी जो है वो उजागर होती है सर सैयद की ज़िंदगी से, और इसी ने मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस दिया ज़िंदगी को से जूझने का, ज़िंदगी से मुकाबला करने का, और जो आज भी मेरे काम आ रही है। जो कुछ मैंने अलीगढ़ में सीखा है वो अपने तरीक़े से मैं अपने फ़न में, अपने आर्ट में शामिल करता हूँ। मैं साइंस पढ़ने आया था क्योंकि मेरे वालिद ने कहा देखो तुम अगर आर्ट पढ़ोगे तो मतलब जूतियाँ चढ़खाओगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जो कहिए। तो मैं यहाँ साइंस पढ़ने आया, और साइंस में मुझे एक चीज़ बहुत मुतासिर हुई। जब मैं आया तो मुझे बताया कि सर सैयद ने एक मिस्टर ह्यू म्योर की किताब को ट्रांसलेट कराया था। उस किताब का नाम था टेस्टिमनी ऑफ द सॉइल। तो वो जितनी भी जियोलॉजिकल राज थे उनको समझने के लिए, फॉसिल्स को समझने के लिए, वर्टिब्रेट्स को समझने के लिए एक पूरा नुस्खा था जिसको उन्होंने इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट कराया। और सुनते हैं कि वो जब वो आखिरी पेज पर पहुँचे ह्यू साहब, तो उन्होंने ख़ुदकशी कर ली। तो मैंने कहा कि ठीक है, जियोलॉजी को लिखते हैं ताकि कम से कम दुनिया में कुछ ना हो, तेल तो ज़रूरत रहेगी और तेल कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आई वोंट बी अनएम्प्लॉयड। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगा कि इन पत्थरों से बात करना इतना आसान नहीं है। पत्थर हसीन ज़्यादा होते हैं, बात करने में वाज़ेह तो जवाब नहीं देते। तो बहरहाल आई बिगैन टू paint, and I got inspired by stones, I got inspired by science. For me, I was creating a bridge between science and art, and I think that is what made my life very different to what it could have been if I had not been in Aligarh. So Aligarh gave me a new direction of how to look at art, how to look at science, how to look at poetry, how to look at language, how to look at culture, and how to look at life. And I think the interesting thing about Sir Syed was that he could understand the various trajectories that were happening in his time, in his life, in the 18th century, right from his Mughal antecedents to working with the East India Company, and then going through the 1857. जो शख्स 1857 से गुजरा हो, आप सोच सकते हैं उसने क्या क्या नहीं देखा होगा, उसने किस तरह के दर्द नहीं देखे होंगे, किस तरीके से उसने दोनों पहलू को नहीं समझा होगा। आप कहते हैं कि वहाँ बिजनौर में एक चर्च पे हमला हुआ जहाँ औरतें और
बच्चे थे, तो ये खड़े हो गए सामने कि पहले मुझे मारो फिर तुम वहाँ तक जाओगे। तो एक शख्स इस तरीक़े का मिजाज रखता हो, इस तरीक़े की दिलेरी उसमें हो, और वो कि जब वो मुखातिब होता है दुनिया से, मुखातिब होता है अपनी कौम से, तो उसको लगता है कि बस मतलब लोगों को लगता है कि ये कोई वाकई कोई मसीहा उनके बीच आ गया है। तो ये चीज़ें जो हैं जब आप देखते हैं और आप जीते हैं, और ख़ास तौर से अलीगढ़ की इसी रंगीन फ़िज़ाओं में इनको पाते हैं, तो आपके अंदर एक नई ताकत, एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अलीगढ़ के कॉन्फिडेंस का तो मुझे लगता है शायद दुनिया में कहीं भी जवाब नहीं। अब वो एक बात कहने वाली नहीं है, लेकिन मैंने कई साल 20-25 साल तक अपनी डिग्री नहीं निकाली यहाँ से, और ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं बग़ैर डिग्री के मैंने सारी नौकरियाँ की और मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अलीगढ़ की देन थी कि डिग्री हो या ना हो, मैं अलीगढ़ का हूँ, ये मेरी सिफ़ात है और इनको मैं इस तरीके से पेश करता हूँ। अगर मैं शायद डिग्री दिखाता तो मुझे शक से देखते। बहरहाल ये एक दौर है ऐसा कि हमको सर सैयद की नज़र से इस दौर को देखना है, और सर सैयद की नज़र से जब दौर को देखना है तो मुझे लगता है ये लैंग्वेज ऑफ मूविंग इमेजेस जो है, ग्रिफिथ ने कहा था कि 100 years from now, exactly 1924 में, कि the language of moving images can bring about true brotherhood of man and end all armed conflict from the face of this earth. तो ये मुझे लगता है ये वही वक्त आ गया है कि हम लैंग्वेज ऑफ मूविंग इमेजेस से इस दुनिया में जो इस आज तशद्दुद बढ़ रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं, जो मोहब्बतें घट रही हैं, इनको कैसे हम लोग हैंडल करें। तो ये हमारे सामने अलीगढ़ से मुझे लगता है रास्ते मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, धड़कनें हैं, आलिम हैं, अदीब हैं, ऐसे ऐसे दिमाग हैं जिनको जो सर सैयद के नज़रिए से सजे धजे हैं। तो एक फ़िल्म मेकिंग का यहाँ पर एक सिलसिला बहुत ही सीरियस लेवल पे होना चाहिए। फ़िल्म्स कैसे लिखी जाती हैं, कैसे सोची जाती हैं, मेरे ख़्याल में फ़िल्म का सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी भी फिल्में जो हैं वो उन्होंने ज़िंदगी को करीब से देखा है, लखनऊ को करीब से देखा है, अपने गांव को करीब से देखा है, अपनी सभ्यता को करीब से देखा, अपने वक्त को करीब से देखा है। तो हमें भी सर सैयद की नज़र से ज़माने को, आने वाले ज़माने को करीब से देखना है, क्योंकि जो आने वाला ज़माना आ रहा है उस पहले तो ये था कि अंग्रेज़ एक तरफ जा रहा था, हिंदुस्तानी एक तरफ जा रहा था। सर सैयद ने एक बीच में एक तरीक़े का पुल बनाया। अगर वो अपनी रिपोर्ट ना लिखते तो शायद वही ईस्ट इंडिया कंपनी कायम रहती आपके ऊपर। तो उनकी रिपोर्ट जो उन्होंने बगावत के जो की वजहें बताई हैं, अगर वो ना लिखते तो शायद वही अंधेरा रहता। तो द थिंग इज़ दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू थिंक फॉर द वर्ल्ड, यू हैव टू थिंक फॉर द फ्यूचर, एंड यू हैव टू इग्नाइट इन योर सेल्फ द फायर ऑफ लव, एंड दैट कैन ओनली हैपन, आई थिंक, to a very great extent from this soil, from this very soil. अब यूँ तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि हर शख्स जो है सर सैयद तो एक तरीके का हीरा है, उनको तराशा गया है, कितने कितने पहलू से उनको देखा गया है और देखा जाएगा, और वो किस तरीके से हमारे आज की ज़िंदगी से वो जुड़ सकते हैं और हमें आज की ज़िंदगी से जूझना सिखा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिखाया था तुम्ही ने कौम को ये शोर शर सारा, जो इसकी इंतहा हम हैं तो इसकी इब्तिदा तुम हो। तो ये थे सर सैयद, ये उनकी, हम लोग आज उनकी इंतहा हैं, और इसी इंतहा पे मुझे लगता है हमारा एक मुस्तकबिल कायम है, दुनिया का मुस्तकबिल। देखिए अलीगढ़ जो है वो इस वक्त आप इस मैदान में महदूद ना रखें। आप ये सोचिए अलीगढ़ जो एक ज़माना है, अलीगढ़ के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, जो अब यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसेगा। तो ये जो अलीगढ़ के लोग हैं, जो अलीगढ़ के दिमाग हैं, जो अलीगढ़ के
ने आपके दिलों में धड़कनें पैदा की हैं वो पूरी दुनिया में हैं। तो अगर हम इस अलीगढ़ के एहसास की वुसअत को देखें तो उसका कोई हद नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं नईमा साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और ये मुझे लगता है शायद एक लेडी वाइस चांसलर ही सोच सकती थी हमारे जैसे बेवकूफ़ को बुलाने के लिए, क्योंकि बहरहाल ये एक बहुत ही सेंसिटिव दौर है आपके यूनिवर्सिटी का, और इसमें एक हमने फिल्में सारी बनाई हैं तो वो औरतों पे बनाई हैं, तो मुझे लगता है इनके दिल से और इनकी निगाह से जब आप यहाँ की प्रोग्रेस होगी और जो दुनिया अलीगढ़ को अब बढ़ते हुए देखेगा तो बिल्कुल एक नई चीज़ होगी, नए आयाम खुलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और यहाँ बुला के अपने बच्चों के सामने पेश किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और एक बात मैं और कहूँगा कि मेरी नुमाइश हो रही है कि घोड़ों पे मुझे ख्याल आया, फ़रसनामा नाम से घोड़ों पे, ये बीकानेर हाउस में है और ये परसों से है, बल्कि ये आपकी मोहब्बत थी जो मुझे खींच लाई यहाँ, वरना मुझे वहाँ अपने कागज़ी घोड़ों पर बैठे होना चाहिए था। तो ये आप लोग तशरीफ़ लाएँ, ख़ास तौर से जो राइडिंग क्लब के बच्चे हैं वो उसमें ज़रूर उनको मज़ा आएगा, क्योंकि घोड़ों से मुझे भी बेपनाह दिलचस्पी है और मेरे दिल की धड़कन है घोड़े। घोड़ा हर रोज़ सुबह उठ के अपने मालिक के लिए दुआ करता है, उसकी खैरियाफत के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुला के इतनी ज़हमत की, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ज़ुलझना हूँ मुझे डर नहीं थपेड़ों का, मैं ज़ुलझना हूँ मुझे डर नहीं थपेड़ों का, जो रोशनी मेरी पुश्त पे है वो रोशनी खुदा की है। This was Janab Muzaffar Ali Sahab in his baritone, in his typical mannerism, a celebrity, a star from Aligarh Muslim University, and looking dapper in his black sherwani like a true Ali. Thank you very much Muzaffar Sahab for that address. आप सबसे तलबा व तालबात से गुजारिश है, मुज़फ़्फ़र साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है ज़िक्र इन द लाइट एंड शेड ऑफ टाइम, उसे ज़रूर पढ़ें, और बिलखुसूस उसका वो चैप्टर जिसका नाम है द इमली ट्री, चूँकि वो चैप्टर मुकम्मल अलीगढ़ से गुज़रता है और उसमें ज़माना शनासी के लिए जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब पूरा सहरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देते हैं। Ladies and gentlemen, after these addresses from our guests of honor and our chief guest, it is now time to honor them with a memento, with a message engraved from the Holy Quran, Allama al-Insana Malam Yalam. I will request Honorable Vice Chancellor AMU, Professor Naima Khatun Sahiba, to kindly present a memento to Janab Muzaffar Ali Sahab, our chief guest today. I will now request you, Madam, to please present a memento to Madam Snehlata Shrivastava, our guest of honor today. And now I will request our Vice Chancellor to please present a memento to Madam Jaya Verma Sinha, thanking her for her presence here and for that address. And finally, for that wonderful presence and for that address, Mr. Ajay Chaudhary. I request you, Madam, to kindly present a memento to our guest of honor, Mr. Ajay Chaudhary. Thank you very much for doing these honors. Ladies and gentlemen, there are more than 1,000 universities in our big, diverse, inclusive country, and very few of them are 100 years old.
To top it all is the fact that the Aligarh Muslim University is the first university to have a woman chancellor as its first chancellor, Sultan Jahan Begum. We are short of only 1 year from our sesquicentennial celebrations in 1925, because the Madarsatul Uloom was established by Sir Syed here in 1875. And here we are with Professor Naima Khatoon as our first woman vice-chancellor. To us, the sorority of sisters in this university, it was unbeknownst how the African Americans would have felt when they said, "Yes, we can," or how our own countrymen would have felt when they heard at the stroke of the midnight hour, "Making a tryst with destiny." Finally, it's our moment to feel the rush of the proclaim, "We are no less." But hold on, we are not only euphoric for a woman vice-chancellor because it's any woman or merely a woman. We are euphoric because it's her, our very own Professor Naima Khatoon. We have been seeing for decades marking the good in this university with her congeniality, with her cordiality, and her collegiality. A young 16-year-old girl from the school of Odisha arrives in the institution founded by Papa Mian Sheikh Abdullah. She does her master's and PhD in psychology. She joins the teaching community of the university as assistant professor. She also teaches for a year at a university in Rwanda. She presents her research, publications, and presentations at various academic platforms in India and abroad. She also discharges various administrative responsibilities, including provost of halls of residence, the director of the Residential Coaching Academy, one of the deputy proctors of the proctorial team, and last but not the least, the principal of the Women's College, where Madam Snehlata Shrivastava will be happy to know that she made the first exclusive swimming pool for the women folk of the university. I will request Professor Naima Khatoon for her presidential address, and I hail you all to sit back and watch history as it happens. Bismillahirrahmanirrahim. Chief Guest, Janab Muzaffar Ali Sahab, Guests of Honor, Mrs. Snehlata Shrivastava ji, Mrs. Jaya Verma Sinha ji, Mr. Ajay Chaudhary ji, Registrar Mr. Muhammad Imran, Dean Students Welfare Professor Rafiuddin Saab, members of the Executive Council and AMU Court, retired teachers, faculty, staff, students, alumni, persons from the media, all colleagues connected virtually, distinguished guests, ladies and gentlemen, and dear students. Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's my great privilege to welcome you and wish the Aligarh Muslim University fraternity worldwide a very happy Sir Syed Day, the birth anniversary of our visionary founder, Sir Syed Ahmad Khan's birth anniversary. We salute him for being an excellent educationalist who blended tradition with modernity, a profound Urdu prose stylist, a first-rate scholar and historian, a social reformer, and an outstanding builder of modern India. Sir Syed's vision and mission, launched in the 1850s, have molded the lives and mindsets of millions of Indians, particularly the Muslim youth. His yeoman contributions have helped these young boys and girls discover a niche for themselves. Today, the Aligarh Muslim University alumni represent inspiring success stories all over the world. Since Sir Syed laid the foundation of this great seat of learning, with utmost sincerity of purpose, this institution has been scaling greater heights of academic excellence since its inception.
The dedication and hard work of the entire Aligarh Muslim University fraternity has led to our university being declared an institution of national importance. We have been consistently accredited with high grades in NAC assessments. All reputed national and international ranking agencies place AMU among the top higher education institutions in the country. The AMU has taken concerted steps through its NEP cell to successfully and proactively integrate the NEP 2020 recommendations, which will bring transformational changes, especially in higher education. Our students are exploring new opportunities for holistic and multidisciplinary education in the FYUP and skill development. ICT-based teaching, learning and research and innovation are emphasized. Today we pay our heartfelt tribute to Sir Syed Ahmad Khan for his many other valuable qualities of heart and mind. In the post-1857 era, which was vitiated by distrust, hatred and intolerance, he stood relentlessly for peaceful coexistence and cordial interfaith relations between the British and Indians. Apart from crusading for social reform among his community through his Urdu periodical Tehzeeb-ul Akhlaq, he was equally concerned about the welfare of his Hindu brethren. Our hostels, classrooms, laboratories, libraries, sports grounds, and spaces for performing arts are a living testimony to communal harmony among faculty, staff, and students. Our students come from Kashmir to Kerala and Assam to Maharashtra. Also, many international students find a home in Aligarh on Indian soil while pursuing higher education away from their homelands. The AMU is quite rightly referred to as Mini India by the Honorable Prime Minister of India. We must understand that there are so many facets to our dear founder's personality that many speeches will fail to discuss them successfully. Great people become great because they have diverse aspects in their persona. This is the reason we can take inspiration from Sir Syed Ahmad Khan as a student, as a teacher, as an administrator, as a law-abiding citizen, as an amicable negotiator, as an activist, as a leader, as an advocate for social causes, as a reformer, as a futuristic policy maker and planner, as an educationist, as a son, as a father, as a friend, as an optimist, as a man of integrity, and the list goes on. Our homage to our founder will be to pledge to emulate him in all the domains of our lives. I am discussing the following 3 domains today, that is, his constant quest for knowledge production, his establishment of the MAO College, the Scientific Society, the Translation Society, and his academic tour of England in 1869 bear out his overflowing love for disseminating knowledge. His core philosophy was to embrace innovation for the new and shun blind imitation of the old. Our focus on innovation, research and development has enabled us to expand the knowledge delivery system of the university with new courses and academic program in recent years to match with the new age technology and demands. The second aspect is that throughout his life, Sir Syed urged everyone to develop a critical mind, engage in scientific inquiry, and harness our potential and natural resources. In so doing, he was guided by the Holy Quran, which constantly asks us to reflect on the creative wonders in and around us to build a happy, resourceful, and progressive society. At Aligarh Muslim University, we have taken significant strides in updating the digital infrastructure and embracing new technologies to enhance the teaching, learning, research, and outreach experience. We have launched 31 MOOC courses on Swayam platform for the first time.
The third dimension is that Sir Syed stands out above his predecessors and contemporaries for drawing around him a galaxy of some of the brightest minds of the day. He was a staunch believer in democratic functioning, respecting others' opinions, however discordant they could be with his scheme of things, and holding institutions in esteem. His amazing success in his many varied projects was due to these admirable traits of his grand personality. The Aligarh Muslim University community is dedicated to quality education, academic excellence, and world-class research. Our young research scholars have secured fellowships in all cycles of the prestigious Prime Minister's Research Fellowship and the Vishwesvaraya Scholarship. This speaks volumes about our academic leadership, which is aligned with innovation, entrepreneurship, and incubation support. Ladies and gentlemen, today our diverse and beautiful nation is pursuing the goal of Viksit Bharat, which will be achieved by the centenary of India's independence in 2047. It is unequivocally agreed that the road to Viksit Bharat goes through Shikshit Bharat. The four pillars of youth, women, the poor, and the farmers are hailed for their participation in attaining self-sufficiency. The vision includes sustainable development and includes inclusive growth, infrastructure, education, and healthcare. I am glad that AMU's Green Campus project has been phenomenal, focusing on reducing carbon emissions by switching to green energy sources and adopting proactive measures for reducing energy consumption. We have imbibed these life-giving messages from Sir Syed's illustrious life and career. But we cannot sit back and relax because we must go miles before that. Suppose we envision this century from Sir Syed Ahmad Khan's perspective. In that case, we need to change many things in our ways and means to be the futuristic leader in higher education, which our founder always wanted AMU to be one of. Sir Syed's Aligarh Muslim University was ahead of the times in 1920 when the university came into being. I am confident and very hopeful that all the foot soldiers of Sir Syed Ahmad Khan present here and across the globe can create a roadmap to a futuristic Aligarh Muslim University in the 21st century. Let us enrich and strengthen our dedication to Sir Syed's ideals of free inquiry, scientific learning, and cordial relations with one and all. Our abiding meaningful tribute to our patron would be to work unitedly and tirelessly to make his dream come true. He aimed to educate students at his institution and be equally keen on developing their round, considerate personality, alive to the issues and problems confronting their community and country. In this age of technology-led education and artificial intelligence, all our students must equip themselves to make a mark in life. The university administration is always committed to providing you with the requisite infrastructure, skills, and facilities to help you gain articulate soft presentation skills and cater to your creative endeavors. Towards realizing the university's future vision, we have projects in the pipeline for new courses, departments, and faculties. We are making tangible overall developmental interventions through increased faculty position, infrastructure, research projects, memorandum of understandings and collaborations, industry-academia linkage, state-of-the-art equipment, quality books and periodicals, and success makers of digital leadership. This vision can be translated into reality essentially by being shared by colleagues, alumni, and dear students. Let us communicate with each other and inspire each other. Let us be a team, Team AMU, for the 21st century vision. Before I take leave, I must appreciate the brilliant speeches delivered by the representatives of our students and two representatives of our teaching fraternity. This program has been enhanced in its glory and stature
owing to the presence of our chief guest, Janab Muzaffar Ali Sahab, a renowned filmmaker and multi-talented artist par excellence. Guests of honor, Mrs. Snehalata Srivastav, the first Women's Secretary General of the Indian Lok Sabha. Mrs. Jaya Verma Sinha, the first women chairperson of the Railway Board in its 112 years history. And lastly, but very affectionately, our old boy, Janab Ajay Chaudhary. We have been delighted to hear the engaging speeches by all of you, and I am very grateful that you have joined us in celebrating our Founders' Day. The motivational words of our guests and speakers in this grand ceremony will go a long way in guiding this gathering towards a life of dignity, a career of productivity, and an everlasting mission of creative pursuit of the ethics and value system of kindness. On this happy occasion, I reiterate on your behalf our renewed commitment to the ideals of pluralism, social justice, and cordial relations cutting across all levels of caste, creed, and language in the more significant cause of making our country a better, happier place to live in, by the dream of our founder, Sir Syed Ahmad Khan. I take leave with prayers that you fly higher and higher in the sky of glory and truthfulness to take fulfill the Sir Syed's dream. परिंदों को नहीं दीवार और दर से कोई निस्बत, हवा के साथ रिश्ता जिंदगी के साथ रिश्ता है. Thank you very much. देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है. ख़वातीन और हज़रात, तराने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वोट ऑफ थैंक्स होना है. ये हज़ारों का मजमा जो हमारे तलबा और तालिबात का है, इसने जिस अनुशासन के साथ, जिस नज़्म ज़ब्त के साथ आज के इस प्रोग्राम को कामयाब किया है, असल में लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन कल ये होनी चाहिए. चैनल्स पे ये डिस्कशन भी होना चाहिए कि इस सख्त गर्मी के अंदर हज़ारों तलबा किस तरह से सांसें रोक के बैठ सकते हैं. ख़वातीन और हज़रात, आज रात में जो सर सैयद डिनर होता है वो अपने आप में एक अजूबा होता है. मैं अपने मौजूद मेहमानों को बताना चाहता हूं कि 35 से 40 लाख लोग एक कैंपस के अंदर उसी नज़्म ज़ब्त और अनुशासन के साथ डिनर करते हैं, और ये डिनर एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ाम नहीं करता. इस डिनर की पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स के हाथ में रहती है. सारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स करते हैं, वही मैनेज करते हैं, और मैनेजरियल एक्सरसाइज की इससे बेहतर कोई मिसाल नहीं मिल सकती. हमारे तलबा जानते हैं कि ये डिनर न वाइस चांसलर का है, न DSW का है, न ये प्रॉक्टर का है. ये डिनर सर सैयद के नाम से मंसूब है. ये डिनर अलीगढ़ के तलबा और तालिबात का है. आज शाम में आप मुलाहिजा करेंगे कि अलीगढ़ के तलबा एक बार फिर अपना नज़्म ज़ब्त दिखाएंगे. मैं अपने तलबा को ये कह के मुखातिब करता हूँ, परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है. मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है. मैं इस वक्त गुजारिश करूँगा आज के होस्ट डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन साहब से, जिनकी जांफशानी और जिनकी मेहनतों से आज का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं. ओवर टू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर रफ़ीउद्दीन साहब. शुक्रिया शारी ककील साहब. सो चीफ गेस्ट जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नईमा खातून, गेस्ट ऑफ ऑनर्स Mrs. Snehalata Srivastav, Mrs. Jaya Verma Sinha, Mr. Ajay Chaudhary, Registrar, Mr. Muhammad Imran, colleagues, staff, students, alumni, university guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and my heartfelt greeting on the occasion of Founders' Day Commemoration Meet 2024. This day is also called Eid al-Alik in common parlance. At the outset, I pay my heartfelt homage to our legendary founder, Sir Syed Ahmad Khan, on his 207th birth anniversary. Esteemed guests and members of Aligarh Muslim University community, we have rightfully celebrated and honored his remarkable heritage. It is my humble duty to express heartfelt gratitude to each and every one of you on behalf of Aligarh Muslim University.
Your presence and contributions have made this occasion truly memorable. Today, our chief guest is one of our very own old boy, the veteran Janab Muzaffar Ali Sahab. His profound message to AMU students for the embracing their roots and culture with pride, but always letting the mind and imagination soar beyond boundaries, deserves appreciation. It was heartening to have him with us in all new hat on this momentous occasion. I am filled with immense pride while putting on record my gratitude for our Vice Chancellor, Professor Naima Khatun. This is first ever Founders Day commemorative meet of Aligarh Muslim University when the presidential address has been read by a woman. I wear it as a badge of honor to be the host of this milestone ceremony. She has put all her might and force to lead us in making this event a success, commensurate with its glorious stature. Our guest of honor, Mrs. Snehilata Srivastava, Mrs. Jaya Verma Sinha, and Janab Ajay Chaudhary have added grace, prestige, and honor to this dais and elevated the tone of the proceeding of this Founders Day. I thank all three of them for their time and affection for the Aligarh Muslim University. On this bright and luminous afternoon, we have been joined by Francis W. Pritchett and the representative of the Ghalib Academy, New Delhi, as the winners of Sir Syed International and National Excellence Awards 2024. I thank them all for accepting the awards and taking out the time to add radiance to this assemblage. I now take this opportunity to acknowledge the officers and post holders of Aligarh Muslim University for overseeing the smooth conduct of the program in their respective domains. My colleagues, Registrar Mr. Muhammad Imran IPS, Finance Officer Professor M. Mohsin Khan, Controller of Exam and Admission Dr. Mujibullah Zubairi, Proctor Professor Muhammad Wasim Ali, OSD to VC Office Professor Asfar Ali Khan, and OSD Development Professor Asim Zafar have fulfilled their responsibilities with genuine efforts. I also thank my own team members in the Office of Dean Students Welfare for cooperating with me in hosting the program. For the hands-on the organization of this successful program, my sincere thanks are due to Provost of all Hall of Residence for boys and girls along with their worthy team of warden who put in hours of diligent work to uphold the festivities in a manner that befits the occasion. Professor Nishat Fatma Zaidi, University Librarian, organized the impressive exhibition of books and book launch this morning at Founders Residence. Professor Muhammad Naved Khan and Professor Jamal Khan, along with the Pandal Committee members, for their meticulous attention to detail and managing every aspect with great care to create a beautiful grand venue for this commemoration meet. Professor Zaki Anwar Siddiqui, MIC Land and Garden, along with gardeners for execute floral arrangement at the venue. Professor Asim Siddiqui, MIC Public Relation Office, and Mr. Umar S. Pirzada deserves our gratitude for organizing the All India Sir Syed Memorial Essay Competition and for effectively promoting the program in the media. Professor Abdur Rahim Qidwai headed the committee for the flawless drafting of the speeches, cards, and background notes. Professor Syed Amjad Ali Rizvi, Secretary, University Games Committee, and Dr. Wasif Muhammad Ali, President, Writing Club, have added equestrian elegance to this ceremony, enhancing its traditional splendor. This event was watched live by the worldwide Ali community, all owing to the unhindered connectivity and a smooth webcast managed by MNF Computer Center Director Dr. Parvez Mahmood Khan. Professor Izharul Haq Faruqi and his team from MIC Building Department have diligently worked on infrastructure upkeep and refurbishing the facade to welcome the guests. Professor Salman Hamid, MIC Electricity, has ensured an uninterrupted power supply and safe electrification of the Pandal. Professor Muhammad Ali, MIC CAW, and his team is appreciable for bringing the girls students from hostel to this
venue. Dr. Ali Jafar Abdi, University Health Officer, and his team of Safai Mitra kept the surrounding clean, healthy, and hygienic. Dr. Jameel Ahmed, the MIC Guest House, has been making personal effort to ensure hospitality, attending the needs of the guests, and overseeing the catering. Audio-visual teams of CEC, Mass Communication, staff of CPO, and Azhar Abbas for doing all the commendable job. Professor Shafiq Idwai and Professor Zehra Mohsin captivated us with their speeches in both Urdu and English, once again reaffirming the enduring relevance of Sir Syed's message to today's world. We are equally appreciative of the skillful, multilingual, comparing and award presentation by Dr. Faiza Abbasi and Dr. Sharik Akhil. May the Almighty bless our distinguished speaker, Ms. Zunaira Habib Alvi and Mr. Sarim Ayubi, the riders in the riding squad, girls and boys of Tarana team, student volunteer of CEC, and everyone in this large gathering. I encourage you all to uphold the decorum during tonight's dinner and serve as an example of exemplary behavior. In closing, I would like to convey our sincere gratitude on behalf of Aligarh Muslim University community to all who joined us in our celebration today, wishing you and your families a life filled with good health and tranquility. May the Divine bless our institution as we strive to hold Sir Syed's vision of knowledge, enlightenment, and large-hearted toleration. Thank you and wassalam. Thank you very much, Dean Students Welfare, Professor Rafiuddin, for moving the vote of thanks, a very, very comprehensive vote of thanks that has left nothing untouched. We should all join hands in thanking him also for being the very gracious host of this ceremony. The increasing footfall in the pandal is indicative of a climax. आज आपने 13 तकरीरें सुनी हैं, एक दो नहीं 13 तकरीरें सुनी हैं, और आपने नज़्म ज़ब्त का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा. आपने यू हैव बिहेव्ड लाइक अ ट्रू अलीग. आपको तोहफ़ा मिलना चाहिए. सर सैयद डे के दिन हमारे तलबा और तालबात को 3 तोहफ़े मिलते हैं. पहले तोहफ़े के लिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है मोहतरमा वाइस चांसलर साहिबा से, प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा से, कि आपके दिलों को खुश कर देने वाला एक बहुत अहम ऐलान. Tomorrow the classes will remain suspended. कल छुट्टी है आप लोगों की. We must thank Madam for upholding this tradition. Ladies and gentlemen, this program was actually a bunch of traditions. We end it with your second gift today. Of course, your third gift is the hall dinner that you will be enjoying this evening. Your second gift is the AMU Tarana. कहते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का कौल है कि अलीगढ़ का दूसरा नाम उर्दू है, और ये कहना हक बजानिब होगा कि उर्दू का दूसरा नाम मुश्तरका तहज़ीब है, जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं. आज का हमारा ये डायस, आज के तमाम मेहमानान ज़ीवकार की जानिब से दिए हुए खुतबे, they inspire us to renew our commitment, to reinvigorate our pledge towards the beautiful composite culture of India. उर्दू के तमाम ऐसे मुतअद्दद शोरा अलीगढ़ से निकले हैं जिनका कलाम रहती दुनिया तक एक सरमाया माना जाएगा. And I must now name the Keats of Urdu poetry, असरारुल हक मजाज. मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की तराना टीम अपने फॉर्म में आ चुकी है, यहाँ मौजूद है. नज़र अलीगढ़ के कुछ अशार यहाँ पेश किए जाएंगे तराने में. I will request that immediately after the Tarana, everyone stands in their respective positions in honor of the national anthem of our great country, India. After the national anthem is over, please remain seated where you are. We will not mob the dignitaries. I know they are all celebrities. We are all waiting to get a click with them
but we will maintain order in the pandal. Please remain seated. Let them make an exit, and then let us wish each other a happy Sir Syed Day, ending with this commemorative meet 2024 here, presided by Professor Naima Khatoon, with the AMU Tarana. सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज यहाँ, फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज यहाँ, गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज यहाँ, गाए हैं वफा के गीत यहाँ, है जुनू का साज यहाँ, मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेरे खींची, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, है सारे जहाँ का सोज यहाँ, और सारे जहाँ का साज यहाँ, रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ, खुद आँख से हमने चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ।
को समन पर बरसेगा, हर कष्ट दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसरे तरफ पर कड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। All the audience has requested to please remain in their seats till the dignitaries take a smooth exit. Thank you so much for your utmost cooperation. ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसिता, हम तेरे ही फूल हैं और हम तेरे ही बाग़बान, चल दिया है इस चमन से अब फिज़ा का कारवां, चल दिया है इस चमन से अब फिज़ा का कारवां, यहाँ की तकबीरों अज़ां से कांपता है
सदियों का सर